So hello and welcome. I'm Dr. Ankit, your faculty of anatomy in INI-CET platform. And today in this session, we are going to discuss some of the rapid recap topics and few of the MCQs for subject anatomy, mainly intended for the INI-CET exam. So let's start. So these are the few of the topics that we are going to cover in this particular session. We'll start with the most important one, and that is, as we all know, the cranial nerves over here. So there will be few MCQs also. Apart from this, we will also be discussing about few other important topics like brachial plexus, the arteries, salivary glands. Then we have the germ layer derivatives. We have the pharyngeal arches, urethra, bronchopulmonary segments, coronary vessels. And we want to stop over here. There will be other high yield miscellaneous topics apart from this. So this is going to be a high yield session. Nearly all of the high yield topics will be covered over here with a few of the MCQs just for your practice, right? So let's start with the most common topic, the most important topic and most commonly asked, that is our cranial nerves over here. Let's start with. So this is a figure over here showing us the base of the brain, basically showing us the brainstem and the inferior view of the brain. Basically all the cranial nerves are shown over here. As we all know, there are 12 pair of cranial nerves and they come out from the brain. The first and second, they mainly go to the cerebrum, but the third to the 12th, they come from the brainstem. Let's see over here. The nerves, as we can see, the olfactory nerve number 1, then we have the optic nerve that goes into optic chiasm and optic tract over here. Recognition over here is what we are intending. So midbrain part is giving rise to the third and the fourth cranial nerve. That's a midbrain part. Below this, we have the pons. Basically, the fifth nerve is coming from the pons region, right? Identified. And then we have the sixth, seventh, and eighth. The sixth, seventh, and eighth, they are coming from the pontomedullary junction over here. So as we know, that M is for motor nerve and M, they are lying medially. Remember this point over here. And as you can see in this image, the sixth being a motor nerve is more medial and eighth being a sensory nerve is more lateral. So 6, 7, and 8, they come from the PM junction, pontomedullary junction. The 9th to 12th in the cranial nerves, they are coming from the medulla oblongata. Again, in 9th to 12th, we should know that the 12th is the motor nerve, so it is more medially. So in this, we can understand that this is the 12th nerve. This over here is the hypoglossal nerve. It is more medially than the 9th, 10th, and 11th. And here, just if we zoom it a bit, we can see this is the pyramid part, that is the olive part. So questions have also come that which cranial nerve rises from the sulcus in front of the olive or pre-olivary sulcus, that is the hypoglossal nerve. So hypoglossal nerve is coming from the pre-olivary sulcus over here. So try to recognize some of the important cranial nerves over here. Next image we can see over here, again a diagram only showing us the cranial nerves. Let's quickly revise it. This probably is the first cranial nerve, the olfactory, that is the optic chiasm related to the optic nerve. And here we have the third cranial nerve and this is the fourth cranial nerve. Remember the fourth, the trochlear nerve? It has an internal decussation and it arises from the dorsal part of the brainstem. So this is the only nerve which comes from the posterior aspect or dorsal part of the brainstem. Then we have this very thick nerve, fifth trigeminal, coming from the pons region. That is the pons, that is the midbrain. And these are 6th, 7th, and 8th nerve from the pontomedullary junction. Then we have this 9th, 10th, and 11th. Let us write their numbers from medulla oblongata. And more medially, this one is the 12th nerve, right? So identify these cranial nerves, and then we have a cadaveric image over here also, again showing us the brainstem and the inferior view of the brain. Let us just quickly see in a real brain over here. That is the olfactory nerve, as we can see. That is the optic nerve again. Can you see this thick nerve? If you see this thick nerve, you will realize that this thick nerve over here, right? This is the oculomotor nerve, and you can see this very thin nerve over here. That is the fourth nerve, trochlear. This thick nerve over here will be the trigeminal over here, right? And this is the pons, so therefore this is the medulla oblongata. And from here, there's a group of 6th, 7th, and 8th. The 7th and 8th are probably being, this condensed over here because they have to go through a common opening known as the internal acoustic meatus. Then we have this area, medulla oblongata, and here we have the 9th to 12th nerves over here. In this particular image, we can also look for a few of the important vessels that have been shown over here. So as we all know that below over here, below the brainstem, we have the forearm magnum. And which artery enters over here? These are the two vertebral arteries. These are two vertebral arteries over here. And they both join in front of the pons. And which artery do they form? They form the basilar artery over here. So don't forget that too.
And basilar artery, as it reaches the midbrain part of the brainstem, it divides into its terminal branch over here, that is the posterior cerebral artery. I'm writing PCA over here. And a branch of basilar just before posterior cerebral artery, this over here is a superior cerebellar artery. Remember, it is cerebellar because it is going to supply the upper part of the upper surface of the cerebellum, right? So superior cerebellar artery and posterior cerebral artery, which nerve lies between them? It is the third and the fourth cranial nerve. These two nerves, they lie between posterior cerebral artery and a superior cerebellar artery. Therefore, they are involved in the aneurysms. These nerves can be comprised in the aneurysms around these vessels or around the end point or the tip of the basilar artery. Okay, here we are looking at the interpeduncular fossa as well. Few important structures. Let me just point it out. This, I hope you all can recognize the optic chiasm. Okay, these two swellings over here, these are the mammillary bodies, apart from the hypothalamus or the diencephalon. Clear? So these are few important things that we can recognize from this cadaveric image. Just as we go further, again, this is exercise for you guys. You can point out which cranial nerves are over here, which structures are over here. I guess we already have discussed. Just putting the numbers over here. This has to be number 1, right? And then as we go ahead, this is number 2 optic nerve. Okay, and as we go more inferior, this is 3rd nerve, that is 4th nerve, this thick is the 5th nerve. Here we can see this is the area for the pontomedullary junction. So 6th nerve might be coming from here, and this group of 9th to 11th nerves will be coming from the, you can say, the post-olivary sulcus or behind the olive vessels we already have seen. Just a quick overview of the important cranial nerves, how to recognize them, right? As we move further, this is again an important topic. Skull foramens, a part of the cranial nerves only. Very important foramens are being shown over here. I'll just highlight few important foramens so that we can have a good idea as to how to identify them. Now, this image over here is taken after you remove the vault of the skull. So you're looking at a cranial fossas. Okay. Okay. Important foramens and their contents is what we have to look over here. Identify the optic canal and what passes through it. It is the optic nerve and the ophthalmic artery. Ophthalmic artery, branch of the internal carotid. Then remember the superorbital fissure. It's what you also see in front. Okay, when you see the orbit, जब orbit देखते हैं तो orbit के अंदर you have an oblique fissure, that is the superorbital fissure, and basically all the motor nerves and the V1, the sensory nerve of the eyeball, passes through over here. So these are all the contents written over here. Then ROS, rotundum ovale spinosum, they are going in which direction? They go in a posterolateral direction. Okay, so ROS, rotundum ovale spinosum. Do remember rotundum, maxillary nerve, ovale has mandibular nerve, and spinosum has that artery responsible for the epidural hemorrhage. And which artery is that? That artery is the middle meningeal artery. Okay, okay, so ROS over. Now do also recognize the internal acoustic meatus. What passes from here? The 7th and 8th nerve with the labyrinthine vessel. Between them, you have this small foramen over here known as the foramen lacerum. Normally, it is covered by cartilage from below. But what courses along with it is the internal carotid artery. So basically, it is the internal carotid artery which you will find over here coming out. But it is not going through and through. It is just coursing along the petrous temporal bone. Which artery over here? Internal carotid artery. You can visualize over here. Okay. Internal acoustic meatus we have seen, then jugular foramen and magnum with hypoglossal. These are 7-8 foramens which, first of all, we have to recognize where are the foramens. Secondly, what structures are passing through it. Like for example, jugular foramen has 9th, 10th, 11th cranial nerves, and as it is the jugular foramen, we have the beginning of the internal jugular vein. That is the continuation of which sinus? Sigmoid sinus, right? Behind hypoglossal canal, so hypoglossal nerve. And the largest foramen, the foramen magnum, you have all these important structures, including the vertebral artery and the spinal accessory nerve, along with all the meninges and the lowermost part of the medulla oblongata that is going down, becoming the spinal cord. So identify these foramens, that's an image-based thing, and look at all the structures passing through it. Okay, take a screenshot of it and then revise it. Let's see the next part of it. Again, important thing related to cranial nerves are what are the cranial nerve nuclei columns. Cranial nerve nuclei columns, right? You can, make out various mnemonics out of it, but understand this image over here. This image is showing us a longitudinal section of the brain stem, which is having the midbrain over here, the pons in the middle, and the medulla oblongata below. There are various cranial nerve columns over here. If you go from this, the medial aspect, that is the lateral aspect. Recently, a question came
asking about the sequence of the structures lying from medial to lateral or vice versa. So remember this sequence over here. Medial to lateral, as I already told you, M for motor nerve, M for medial. Therefore, medial will mainly have the efferent columns. Somatic efferent, spatial visceral efferent, general visceral efferent. As you go more laterally, there are more afferents over here. Visceral afferent, general somatic afferent, and finally vestibulocochlear nerve for the spatial somatic afferent over here. So sequence-wise, medial to lateral. Okay, you can even go through our rapid revision notes over here. They are having all these sequences. So these are the nuclear columns, how they are located inside the brainstem. But then which nerve comes under which nuclear column? For that, we have to look at the next slide over here. These are all the columns shown over here: somatic efferent, spatial visceral, general visceral efferent, and these are the three afferents. And the positioning of the midbrain, pons, and the medulla oblongata over here. So which cranial nerve comes under which? That can be taken from here. Like for example, just take less than a minute for it to cover this topic, because this is a high topic for our INI-CET. Somatic efferent, or general somatic efferent as we might call it, is for the nerves which are supplying the somatic muscles or the somite muscles of the head and neck. So in the head and neck there are various muscles, but only the extraocular and the tongue muscles are coming from the somites or somatomeres. Therefore 3, 4 and 6 they supply the extraocular muscles, and the 12th nerve supplies the tongue muscles. Over. The spatial visceral efferent is for the pharyngeal arches, just remember that. And as a topic, pharyngeal arches that we'll discuss, it's quite important. First pharyngeal arch, the nerve is the mandibular. Second arch, the nerve is the facial. The third arch is the 9th nerve. And the 4th and 6th arch, it is the 10th nerve. So therefore 5, 7, 9 and 10. And as we know, the cranial part of the accessory runs along with the 10th. That can also be included. So 5, 7, 9, 10 and 11, they come under spatial visceral efferent. We are using the word spatial, coming from the pharyngeal arches. And 9, 10, 11 combinedly are known as nucleus ambiguous. Remember, this is a very favorite question of INI-CET. Nucleus ambiguous, 9, 10, 11. Then we come to the general visceral efferent. It is only for, remember, parasympathetic. And again, basics. Remember, you give INI-CET, you give any exams. Basics are always to be touched. The parasympathetic cranial nerves are which one? They are 3, 7, 9 and 10. That should be at the tip of your tongue. And these will all the nuclei which will be found in this particular column. For third nerve, we have the Edinger-Westphal nucleus. For seventh nerve, we have the superior salivatory included with the lacrimatory nucleus. For the ninth nerve, we have this, you can write 7, inferior salivatory. For the 10th nerve, we have all this long column known as the dorsal nucleus of vagus. This is for what? This is for the 10th nerve as written over here. So 7th, remember, is for the superior salivatory nucleus. 9th, remember, inferior salivatory nucleus. Salivation means salivary gland. So now, superior salivatory nucleus, 7th nerve, should go to which salivary gland? Parotid or submandibular. Remind it. Their location on the face does not determine how they are or how the nerves are coming out from the brainstem. Parotid gland is basically supplied by the inferior salivatory nucleus, and the submandibular, sublingual are supplied by the superior salivatory nucleus. Keep that in mind, right? So this was general visceral efferent. Then come to the afferent ones. If you come to the afferent ones, we have visceral afferent. Just remember general visceral and spatial visceral afferent. Just imagine. Viscera, what is the viscera in head and neck? Inside the mouth. What are the cranial nerves which are carrying the sensations from inside your oral cavity or inside the mouth region or pharynx and larynx? Those nerves over here are known as 7th, 9th and 10th. These are 7th, 9th and 10th, and they are combined into a group known as the nucleus of solitary tract. That is again a famous question. That is visceral afferent. Come to the somatic afferent. Now what about somatic afferent? Pain, touch, temperature from the face. Vibration, proprioception from the face. The somatic afferent, general somatic afferent, is basically the 5th nerve. It is having 3 nucleus inside. What are these 3 nucleus? At the level of midbrain, we have the mesencephalic nucleus. Which nucleus? Mesencephalic. At the level of pons, we have the chief sensory nucleus. Chief sensory nucleus. At the level of medulla, going to the spinal cord, we have the spinal nucleus. So basically, the majority part of the general somatic afferent from the head neck region is taken up by the 5th nerve. But around the ears, there are other nerves, though not shown over here, but they communicate with the 5th nerve nuclei. Those are basically 7th, 9th and 10th. 7th, 9th and 10th. Remember the Jacobson's nerve, the Arnold's nerve, and small part of facial nerve over here. Okay, so basically GSA is 5th nerve, but 7th, 9th and 10th might go along with it. Last not the least, we have the spatial somatic afferent, spatial senses, and that is for the vestibulocochlear nerve. Right, vestibulocochlear, that is the 8th nerve. Now, other 2 cranial nerves are left over here. Which ones? The first and second.
So remember, the vestibulocochlear is all about the balance thing, right? So first and second might also be combined over here. Normally, what we include is, remember, the visceral afferent was for the taste. Which nucleus? GBSVA. Taste is related to the olfaction. So first nerve we can include over here, though they are not a part of brainstem. And the second nerve is more included in the SSA part. Okay, just giving an extra point over here. Now these are the nuclear columns. Do revise them, take a screenshot of them. They are high topics. Okay, let's see a couple of MCQs over here. Pause it and try to give the answer. 59-year-old man complains of persistent headache. An MRI shows aneurysm in the interpeduncular fossa arising from where? Basilar tip over here. Which cranial nerve would be most directly affected by this aneurysm? Basilar tip is what? We have the two vertebral arteries. We give the basilar artery, divides into two, posterior cerebral artery. Where is the aneurysm? Aneurysm is right over here. Which cranial nerve is related over here? What was that nerve that was coming out from here? That nerve was the thick nerve, was the oculomotor. On the sides, we have a thin nerve, the trochlear nerve. But at the basilar tip, we will have the oculomotor. Now, if we know this thing, we would be searching for the answer. Do they have oculomotor as the option? Yes, they do have. Hence the answer. Right? Abducens nerve is a sixth nerve that is commonly involved where? In increased intracranial tension. Remember, optic nerve, we all know the visual field defects, and trochlear nerve again might be included in aneurysms, but not at the basilar tip, on the sides. So fourth nerve can also be included in aneurysms, but not at the basilar tip because it is coming from behind. Okay, we have seen the image. Let's see the next one. Okay, long question. A 79-year-old man is brought to your office by his wife because he keeps running into things on his right side. This single line is quite important. He keeps running into things on his right side. His wife also states that he seems to ignore objects on his right. Remember, he can't see things on his right. I hope you're getting the point. You test his vision in each eye, determine that the patient cannot see anything in the right visual field of either eye. You order a head MRI because you suspect which of the following. So there is right-sided homonymous hemianopia. Understand this is the visual field defect question. Right-sided homonymous hemianopia. Now, if you know the basics, it is referring to what? It is referring to a lesion where? In the optic tract or distal to it. So there is problem somewhere in the optic tract, but on which side? Right or left side? It is the contralateral left side. Okay, just by the history we know that this should be, or this could be somewhere the location of a lesion. Now look at the options. You have ordered an MRI. What are you expecting it to become? A pituitary tumor compressing the optic chiasm? Obviously not, because a lesion in the optic chiasm will give other features. It could give rise to the bitemporal hemianopia if it is the central part. A tumor in the medial wall of the right orbit compressing the optic nerve? No, because optic nerve there will be right eye complete visual field loss. Okay, it will be a monoocular blindness. Aneurysm of the left MC compressing the left optic tract looks like a good option over here. Let us keep this. A tumor in the middle cranial fossa compressing the right optic tract? No. So what is the answer? Answer over here is some relation related to the left optic tract, and hence we can go. So what knowledge has been tested over here? They will test your visual field pathway and visual field defects knowledge. Okay, let's see one more. It's a question of the cavernous sinus and the high topic. 54-year-old lady comes to the physician because of one-day history of fever, chills, and double vision. She also has a 2-week history of headache and foul-smelling nasal discharge. So there's history of fever and all, and nasal discharge, headache and all. Examination shows mild swelling. Swelling around where? At the left eye. Her left eye doesn't move past midline on far left gaze, but moves normally when looking to the right. So left eye is not able to abduct more. I hope you're getting the point. Corneal reflex is absent. Absence of the corneal reflex is most likely caused by compression of which of the following labeled structures. Now, they have totally, this diverted the whole question. Start with the history and examination findings. Then they came back to the corneal reflex and they said that, okay, corneal reflex is due to the defect of which of the following labeled structures. Now, we should know corneal reflex, what is the afferent and efferent nerve over here. What is corneal reflex? So if you touch the cornea or the conjunctiva with a wisp of cotton over here, certainly there is tight closure of the eyelids or the eyes. So afferent is basically the V1, that is the ophthalmic division of trigeminal. And closing of eyes is a muscle, basically orbicularis oculi. Which nerve supplies the facial muscle? It is the 7th nerve.
So in this image of cavernous sinus, we have to identify V1 or the seventh nerve. Now see, the nerves related to the cavernous sinus are third nerve, fourth nerve, V1, V2, even the sixth nerve, but not the seventh nerve. So basically we have to look for the V1. Where is V1? In the lateral wall of cavernous sinus, B, option number B over here, this is the third nerve. Below this, fourth nerve. D is V1, E is V2. Now V2 may or may not be present. I'm just writing brackets plus or minus. In the center, this A option is the sixth nerve, abducent, and this artery is internal carotid artery. So now I hope the point is very much clear. Corneal reflex, you have to search for the V1, and therefore V1 option number D would be the answer. What we are looking over here is a coronal section of the cavernous sinus with the pituitary gland over here and the sphenoid bone with the sphenoid air sinuses below. Remember, transsphenoidal surgeries are taken up from here only. So this is a coronal section of the cavernous sinus, having all these venous blood inside. Okay, let me show you an image also with all the labeled image. The same thing, but all the labeled image, you can see the nerves over here. I'm underlining them, the third nerve, then the fourth nerve, and this is what they asked in the question, and the V2 over here. In the center, we have this abducens along with the internal carotid artery. This was the pituitary gland over here, hypophysis cerebri. Okay, it's a coronal section. This image is also important, right? Chalo ji, let's move to the next one. One more question. Structure passing through the structure marked below is. So there's a mandible and they have marked something over here, foramen on the inner aspect of the rams of the mandible. Now they're asking you what passes through it. So first of all, you should know this is a mandible and this foramen is what? This is a mandibular foramen. This is the mandibular foramen. And what passes through this mandibular nerve? No, not the entire mandibular nerve, but a branch of mandibular nerve. Which branch is that? That is the inferior alveolar nerve. So what passes through the mandibular foramen is a nerve that is the inferior alveolar nerve and also the inferior alveolar vessels. Inferior alveolar vessels, right? Do remember that these vessels over here, or these arteries over here, are basically branches of the maxillary artery. There is no artery like mandibular artery. There's maxillary artery, which gives off the inferior alveolar artery. But then the nerve also passes. Let us see. We can search for them in the options. A is maxillary nerve, B is, yes, B is inferior nerve. This will be the answer. Option number B, inferior nerve, will be the answer, right? So likewise, the questions can come from over here. Maxillary nerve passes through which foramen? It was the rotundum, just for a quick revision. Lingual nerve doesn't pass through any foramen. It's a branch of the mandibular nerve. And supplies the lingual, means tongue. Cor tympani, again a branch of the seventh nerve, facial. Okay, move ahead. There's a whole image over here showing us basically what? Showing us basically the mandibular nerve. It's a mandibular division of the trigeminal is what they are trying to show us. Passes through which foramen? It's a foramen ovale. And here it was our inferior alveolar nerve. If you can see over here, this was the inferior alveolar nerve and it gave other branches, lingual nerve going forward. So all the different branches. Now as a topic, mandibular nerve itself is also quite important. All the branches of it. Just remember, there are few branches coming from the trunk of the mandibular nerve. It divides into anterior and the posterior divisions. Just for a quick understanding, posterior division gives three important branches. They come in the exam. Posterior trunk or posterior division of mandibular nerve. These three can you even remember by the mnemonic ALI. A is the auriculotemporal nerve. Where is it involved? Think about it. It is the postganglionic for the parotid gland. L is the lingual nerve. It supplies the tongue. But again, it moves around a very important structure and the surgeries around that structure might damage this nerve. Which structure is that? It moves around the submandibular duct. Remember, submandibular duct, submandibular. You'll see in an image. And I is the one that we are referring right now is the inferior alveolar nerve. Alveolar, inferior. Alveolar means the sockets of the teeth. Inferior means obviously the mandible. Okay, so remember these at least ALI for the posterior. Anterior division basically gives rise to the masticatory muscles. Okay, just remember this basic idea, but don't forget this ALI, that might help you. Right? So let's see the next one. Again, a good question, clinical question over here. They're asking us 7-year-old presents with the shingles. Shingles, you should know, herpes zoster, again reactivated. On the left forehead, upper eyelid, and bridge of the nose as shown what sensory ganglion? So shingles, they are dormant. They are the varicella zoster in the dorsal root ganglia. And in old age, when the cell-mediated immunity goes down, they might again reactivate and they pass through the sensory nerves and they show the eruptions on the skin, plus quite painful.
They are the shingles. Now they are distributed only on one side of the body, and that too on the sensory nerve location, or the dermatome of that particular spinal nerve, or the nerve over here. So this area is referring to which nerve? It's the upper eyelid, not the lower eyelid and the forehead. This area is basically the area of V1, that is the ophthalmic division of the trigeminal. So this distribution is to the ophthalmic division of trigeminal. Now, if it would have been on the lower eyelid and this cheek area, it would have mandible V3 and any part of the body depending on dermatomes. Now, here I would like to emphasize, we have a topic of dermatomes in extra videos. Go ahead and have a look at it. Now, they're asking us which ganglion is responsible for it. It has to be ganglion of which nerve? Fifth nerve. Options are otic ganglion, trigeminal ganglion. Option number B is the best answer over here. Otic ganglion and all, if you look over here, otic ganglion is what? Basically parasympathetic ganglion. So ciliary is a parasympathetic. Cervical ganglion is a sympathetic ganglion. Okay. Answer therefore is the trigeminal ganglion, sensory ganglion. Right. So let's see this sensory nerve supply the face. Here you can imagine this area is of the V1. This is what they asked about the forehead and the upper eyelid. That area is V2, lower eyelid and the upper lip. This area is V3. And do remember this area around the parotid region or the shaving area that is supplied by the great auricular nerve. Very famous question. Okay. And then we have the other structures below. Right. So let's see the next one. Question from the previous image only. When testing the sensory supply of the face, it is important to remember that the skin, where at the tip of the nose, is supplied by which of the following nerves? Just for 2 seconds, look at this image, look at the tip of nose and realize which nerve are they asking for. If you know the answer by now, it was the V1, the ophthalmic division of the trigeminal, option number C over here. Let us now look at it. This is what they ask in the next question. This is what they ask in the question, tip of the nose. That is the territory of the V1, ophthalmic division of trigeminal, and that is what they asked. Okay, so do remember it. That is the correct answer over here. Let's see the next one. What is this? This is the tongue. And all the supply, the nerve supply of the tongue has been shown over here. On the left side is the motor nerves, basically it's the hypoglossal, which supplies all the muscles of the tongue, be it intrinsic or be it extrinsic. The only exception over here is this palatoglossus muscle that is supplied by the vagus nerve by the pharyngeal plexus. Because palatoglossus is also a muscle, not only of the tongue but also of the soft palate. On the right side, we are showing the sensory nerves. Sensory nerves in tongue are in two ways. One is the general sensory for the pain, touch, temperature, and one is the spatial sensory for the taste. For the anterior part, the general sensory is by the lingual nerve, and for the spatial sensory, it is by the chorda tympani. So chorda tympani carries taste. And if you go to the posterior part, general and spatial both are by the ninth cranial nerve. And as you go more posteriorly, a very small patch of the tongue is supplied by the interlaryngeal nerve, which is actually a branch of the vagus nerve. Just look at this image. And do remember what INI-CET guys might ask you is that anatomically the svelate papillae lies in the anterior part of the tongue, anatomically, but its nerve supply comes from the ninth nerve or the ninth cranial or the glossopharyngeal nerve. So anatomically the velate papillae, you can see, lies in front of the sulcus terminalis, but nerve supply comes from the glossopharyngeal nerve. This is what you might remember. That is what they might ask you. Okay, let's move to the next one. Okay, this I guess we already have done. Just quick recall. Which cranial nerve contains the afferent and the efferent of the corneal reflex? Remember the question we did on the cavernous sinus. Corneal reflex afferent was which nerve? V1. Efferent was 7th nerve. Therefore, 5th and 7th, option number C will be our answer over here. 5th and 7th. I hope that is clear. Choji, what does this image show us? These two images over here are showing us the facial nerve palsy, the 7th or the facial nerve palsy over here. One is going to be a supranuclear palsy, and one is going to be the nuclear or infranuclear palsy. Remember, the Bell's palsy falls under which category? It falls under the infranuclear palsy, which is the most common thing over here, Bell's palsy. Now, remember one thing. Whenever there is a nuclear or infranuclear or a Bell's palsy, there is ipsilateral total facial muscle paralysis. Okay, if you look at both the images, look at the forehead, look at this horizontal wrinkles on the forehead. They are present on both the sides. So it means that it is not a nuclear. But if you look on this girl over here, you can see the right side of her face is contracting pretty well, but the left side of the face is not able to contract.
So therefore, this picture over here is showing us the left-sided nuclear or infranuclear or Bell's palsy, facial nerve palsy. Understand this. If you see the forehead on the right side, the forehead, both sides, the muscles are contracting. Which muscle? Basically, it's a frontalis. And if you look on the lower side, obviously, there is the right side, the muscles are paralyzed over here. So in a supranuclear palsy, what actually happens is, there is contralateral lower half of face, contralateral opposite side, lower half of face, that is paralyzed. Just remember this basic point. Therefore, there is a right-sided lower half of face paralyzed. It means that there is left-sided supranuclear palsy. Now, this particular case is what? It is left-sided supranuclear palsy. Left-sided supranuclear palsy. Reasons could be many. It is basically supranuclear, means above the nucleus of the facial nerve, which was found in the brainstem. So it could be from the internal capsule, could be from the cerebral cortex, could be from the cerebral to the nuclear. It could be lesion anywhere in between them. So this image is for the left side supranuclear palsy, because the right side, this contralateral side, lower half of face is paralyzed. So remember these features of the facial nerve palsy. They can ask you anytime. This can be confusing, and this is, remember, questions are normally asked which are commonly seen in the clinics and the IPDs and the wards over here. Okay, let's see the next one. This is the image over here showing us the same thing. On one side, they are showing us the supranuclear palsy. Supranuclear. On the other side, they are showing us the nuclear or infranuclear. Also, commonly, we all know about the Bell's palsy. So in a Bell's palsy, on the right side, you can see the right half of the face is completely paralyzed. But on this image, you can see it is the left supranuclear. So right-sided, that was the image. Right-sided, that is contralateral lower half of face is paralyzed. Just remember that, facial nerve palsy. Facial nerve palsy and the Heil topic. Let's move on. Answer this question. After asking a 47-year-old lady to open her mouth wide and say, ah, the physician notes deviation of the uvula to the left side. You can look over here. This is the uvula over here. An asymmetry in the elevation of soft palate with the right side of palate sagging. So right side of palate was slightly sagging than the left side. Fine. What nerve is most likely damaged? So uvula and palate, they are basically referring to which area? Anatomically, they are referring to the soft palate. And soft palate, what does the motor supply of soft palate? Basically, it is pharyngeal plexus, barring exception, that is the tensor palatini supplied by the mandibular nerve. But most of the muscles are supplied by the 10th nerve. So pharyngeal plexus itself has a motor component of vagus nerve. Now, the things are being shifted to the left side. The right side of palate is sagging and the uvula is pulled to the left side. It means that the right-sided, the muscles are not getting proper innervation. It means the right side nerve is having some problem. Which nerve? Vagus nerve. So problem is with the which nerve? It is the problem with the right vagus nerve. Therefore, now look for the answer over here. See, if you have good conceptual knowledge, basic concepts, not very high-fi concepts, you will be searching for the answer or the 4 options. Wait, before reading the options, you should know the answer. That is where the preparation is going good. Okay, so answer over here is right vagus nerve. Glossopharyngeal nerve, basically, are referring to the sensory part. And hypoglossal nerve, basically, it is for the tongue, not for the uvula or the soft palate. And left vagus nerve looks okay. Answer is option number C. Let's see this question also, a very famous question asked nowadays. A swimmer presents to your office with an external ear canal infection. The patient coughs during inspection of the external auditory meatus. You're examining the patient, starts to cough. The cough results from the irritation of which nerve that innervates the external auditory meatus? Right? So you're examining the external ear canal, the patient starts to cough. So there has to be some connection between the nerve supply in the ear canal and the cough. So cough is what? Cough is all your muscles of the pharynx, larynx, and obviously irritation of the respiratory tract. So what's the motor component over here in coughing? It is a 10th nerve. So basically for coughing part, we know that it is a vagus nerve. Does vagus nerve supply something in the ear canal? The answer is big yes. Remember in a nuclear columns, when we look for the GSA, we said it is a 5th nerve, general somatic afferent, pain test temperature. But then we said 7th, 9th and 10th around the ear canal, they also do supply it. And the pinna in the ear canal. So it is this 10th over here which is directly related to the coughing. So therefore answer over here will be the vagus nerve. Let me show you an image also of the nerve supply of the pinna. Have a look over this is the cranial 7th and this is the 10th nerve, also known as the Arnold's nerve. It's a branch of the vagus nerve. Jacobson's nerve is for the 9th nerve that mainly supplies the middle ear.
Okay, and here you have the auriculotemporal nerve, great auricular nerve. See, whichever nerves has the word auricle, obviously they are going to supply the pinna. Auriculotemporal nerve is a branch of V3, great auricular nerve comes from the cervical plexus. So examining the ear canal, which is having the 10th nerve supply inside it, there can be a reflex cuffing. Remember this, very famous question. A lady came with a large abscess, very, very famous question. This is for your quick recall. Large abscess in the middle of the right posterior triangle of the neck. The physician did IND. 5 days later, the patient noticed that she could not extend her right hand above her head to brush her hair. It means that she could not, means there's some problem in overhead abduction. Right? The incision drainage was done in the posterior triangle. Which nerve is located over here in the posterior triangle? The anatomical landmark is which nerve? It is the 11th nerve. Which part of 11th nerve? The spinal part of the 11th nerve. Basically, this also comes under GSE, the general somatic efferent, which had 3, 4, 6, 12. It also has the spinal accessory nerve component. Was it is completely motor? It basically supplies 2 muscles. Which 2 muscles? Sternocleidomastoid and trapezius. Fine. So this 11th of the spinal accessory nerve might have been injured in this posterior triangle of the neck, which could have paralyzed these 2 muscles. Is there any connection between these muscles and the overhead abduction? Yes. What is that? Overhead abduction in the upper limb, as we study, is basically done by the 2 muscles. What are those? These are trapezius and serratus anterior, not a sternocleidomastoid. So one of them might get paralyzed, and therefore the answer will be there might be a cut. What could be the cause they're asking? There might be a cut to the spinal part axis. This is how it is proven. Trapezius gone, trapezius and overhead abduction related. Understand the relations. Not just there can be IND, there could be a lymph node biopsy being taken up from here, which could have led to the damage to this nerve. Because this nerve is very close to the roof of the posterior triangle, a small cut over here might damage this nerve. And as this nerve is going basically from the sternocleidomastoid to trapezius, so if there's a cut over here, there's basically a denervation of the trapezius, because this nerve is going from SCM to trapezius, running in the close to the roof of the posterior triangle of neck. Okay. So remember this question, famously asked question over here, and here's the image over here showing us the posterior triangle. So remember this is sternocleidomastoid, trapezius. This area is a posterior triangle. And here you can see the nerve over here, the accessory nerve, which is running right through it, over here. Okay. Other nerves over there, they are all sensory nerves. The lesser occipital, the greater auricular. They are all sensory nerves over here. Okay, so damage to this might paralyze the trapezius, leading to weakness in overhead abduction. So she complained of difficulty in brushing her hair. Okay, fine. So this was few things of the cranial nerves. Let us move to some other topics also. Some dermatomes over here. I again urge all of you to have a look at the dermatome topic in itself. It's a quite important topic. Clinical important topic. Why? Because shingles question, the radiculopathy or the radicular pain are directly related to the dermatomes. Okay, this is for the upper limb over here. We know the upper limb, the brachial plexus. So basically we are dealing with the brachial plexus, which comes from C5 to T1. Okay, comes from C5 to T1, and here's the dermatome. Remember a few things over here. The thumb region is C6. The little finger is C8 and middle finger is C7. Questions. If they ask you about the elbow, someone is doing a sensory test on the lateral part of the elbow. Which nerve are they testing? They are testing basically the C5. So lateral part of the elbow C5, middle part of the elbow, they are basically testing the T1. They are testing over here. They might show an image. C6, they are testing over here. C7, they are testing over here. C8, T1, right? So these could be the questions. They could show us an image also. Now coming to the brachial plexus as a whole, this is the brachial plexus. We all know that it starts from the roots of the ventral rami, then we have trunks, then divisions, then cord, and the few terminal nerves over here. Remember the location, the roots of the ventral rami, they are located just beneath the scalene muscles because they're coming out from the spinal cord. The trunks, there are 3 trunks over here, upper, middle, and the lower trunk. They are located where? They are located in the posterior triangle of the neck, close to the subclavian artery. The divisions, they basically lie behind the clavicle, so we call them as to be lying retroclavicular. The cords are the one which are lying in the axilla. We all know there are 3 cords, the lateral cord, the bigger and posterior, and one is the medial cord. And then there are a lot of branches from the cord. But remember the 5 terminal nerves from the whole brachial plexus are the 3 bigger ones we all know, median, radial, and ulnar nerve. The 3 big ones. Why? Because they reach the hand. The median, radial, and the ulnar nerve. Apart from this, there are 2 other nerves which come as a
this continuation of the cords, those are our musculocutaneous and the axillary nerve. So these are the what? These are the 5 terminal nerves of the brachial plexus: 1, 2, 3, 4, and 5. They are the branches of the cords, as we might be knowing. So remember the location of the cords, and a lot of cord plexus or cords injuries, or a lot of brachial plexus injuries come in the exam. Anatomical look, where are they lying? Then also have a quick look, which are the branches coming from the roots or trunk. So roots are basically giving rise to dorsal-scapular and the long thoracic nerve. Okay, and the trunks, basically upper trunk, giving rise to these 2 nerves. So these 4 over here, if I may highlight: suprascapular, nerve to subclavius, dorsal-scapular, and long thoracic. They are coming from above the clavicle. So what we normally call them as, they are supraclavicular branches. They are supraclavicular branches of brachial plexus. And we all should be knowing that long thoracic nerve damage leads to what? Winging of scapula. Okay, so these things you should know. And all the branches of the cord, these are all what? These are all infraclavicular, because remember the axilla lies below the clavicle. So all these branches, not just these 5, but all the branches from the cord, they are infraclavicular branches. Okay, just have a good rough idea of it. I might show you a couple of plexus injuries. Nerve injuries we are not covering over here. That is better taken in the orthopedics part. Nerve injuries. Okay, this mode of injury, the person falling down like this, or there is a delivery in which there is excessive stretching of neck. This might lead to upper trunk injury of the brachial plexus, which is known as, we should be knowing, abduction palsy. Abduction palsy. Upper trunk means C5, C6 involvement. And what is the attitude of the limb over here? It's a Vater's tip deformity. I am sure you all must be knowing it. Vater's or the Porter-Man tip deformity. The question they might ask, that this palsy, or in a Vater's tip deformity, the attitude of the Vater's tip deformity is due to paralysis of which nerves? Mainly which nerves are involved over here? You will say, sorry, it is C5, C6. But fine, they are asking you which nerves are mainly involved. Remember the mnemonic SAM over here. S refers to the suprascapular nerve. Suprascapular nerve. A refers to the axillary nerve. And M is not median, it is musculocutaneous. Remember these 3 nerves over here, they are practically, you can test them, and their major component is C5, C6. Therefore, involvement of these 3 nerves, SAM, SAM, will lead to this Vater's tip deformity. Okay, so remember this point over here. And as we can look at the next image over here, this excessive stretching over here, or there could be this breech delivery over here. In this, what is happening? The lower trunk might be involved of brachial plexus, which is C8 and T1. And this palsy is known as, was the upper trunk. This is Klumpke's palsy. C8, T1 involved. Main nerve involved is the ulnar nerve. Okay, because if you go to the branches of the cord, which we have not discussed, but we should know that medial cord, the main continuation of medial cord is ulnar nerve. Medial cord is C8, T1. So ulnar nerve, we know it's a nerve of the hand. So there can be clawing of hand over here. And also when T1 is involved, we can think of the sympathetic denervation of the head and neck, which might lead to Horner syndrome. Although in Erbs and Klumpke's, the Erbs is more common, but you should know Klumpke's as well. Okay, so Klumpke's is the lower trunk. Look at the mode of injury. Ulnar nerve is the main nerve that is involved, and that can be clinically or practically detected out in examination. Okay, let's move from here. Okay, so moving ahead from the brachial plexus, we now come to another topic, that is arteries. So we'll basically, there are a couple of arteries that we'll be discussing. हम कुछ arteries देखेंगे यहाँ पर, and one over here is the axillary artery. The other artery that we'll be discussing is the internal iliac artery. So axillary artery, as we all know, that it is a continuation of subclavian artery, and this artery lies in the axilla, so we call it as axillary artery, क्योंकि axilla में होती है. Now it has 3 parts: first part, second part, third part. Which structure divides it? The structure which divides it into 3 parts is the pectoralis minor muscle. ठीक है. अब इन तीनों पार्ट की ब्रांचेस क्या हैं? Okay, that is important. The first part only gives 1 branch, second part gives 2 branches, third part gives 3 branches. जल्दी देख लेते हैं क्या क्या है. So first part, the 1 branch is superior thoracic और supreme thoracic, क्योंकि सबसे ऊपर होती है ये. So we call it as supreme thoracic artery. Second part will give 2 branches. One is the thoracoacromial artery. Thoracoacromial, ये नाम आप याद रखिए. Other is the lateral thoracic, क्योंकि lateral side में आएगी. It will also supply the outer quadrants of the breast.
तो लेटरल thoracic artery हो गई है। थर्ड पार्ट विल गिव 3 ब्रांचेस, उसमें से 2 ब्रांचेस विल गो अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। वो कौन कौन सी हैं? दे आर द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर circumflex humeral artery, circumflex humeral artery, or the largest third branch is the subscapular artery. This keep in mind. Now this is the theoretical knowledge. इसको use कहाँ करना है? What will the clinical implications or what questions can they ask? What can happen is that this axillary artery might get blocked due to any reason. तो उसमें क्या होता है? What happens over there? That the branches from subclavian and the third part of axillary, they anastomose around the scapula. उसको बोलते हैं anastomosis around scapula. That is the importance of this particular topic. तो ये scapula आप देख रहे हो, यहाँ पर let me label this artery. This artery over here is normally the dorsal scapular artery. लंबी सी artery आ रही, that is the dorsal scapular artery. And the branches which anastomose around the scapula. Question आता है. This question is a famous question from the AIMS till now INI-CET. Are these suprascapular, dorsal scapular? These are from the subclavian artery. And the circumflex scapular and the subscapular, these are from the axillary artery. ठीक है, तो ये 4 ब्रांचेस आपको याद रखनी है, सुप्रास्कैपुलर, डोर्सोस्कैपुलर, सबस्कैपुलर, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर. व्हाट हैपेंस इज, आप यहाँ पे देखिए, ये एक्सिलरी आर्टरी यहाँ पे दिखाई जा रही है. दे आर ट्राइंग टू शो अस द एक्सिलरी आर्टरी. दिस इज अ पोस्टीरियर व्यू. यू आर सीइंग द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, तो ये क्या है? पोस्टीरियर व्यू है. एक्सिलरी आर्टरी स्कैपुला के आगे है, इट इज इन फ्रंट ऑफ इट. देयरफॉर यहाँ पे थोड़ा सा पेल कलर है. अगर ये आर्टरी यहाँ पे ब्लॉक हो गई ड्यू टू एनी रीजन, कोई लिम्फ नोड है, लिम्फेडेनोपैथी है, कोई ट्यूमर ग्रोथ है, कुछ भी है, then these vessels, these highlighted vessels, they form anastomosis around the scapula. क्यों? Because the blood somehow has to reach the upper limb. ऐसा ना होगा ना axillary artery gets blocked and upper limb starts to necrose. तो blood किसी तरह पहुंचना है upper limb में. So these are the vessels. Very important question for INI-CET. Remember. ठीक. चलिए, let's see the next topic. Now the next artery over here was the interiliac artery. देखिए, now the time is less because exam time is roughly around 10-12 days बचे हैं आपके INI-CET के. बट एक बेसिक आइडिया रखिए कि इंटरनल इलियक आर्टरी सप्लाइज विच एरिया? सप्लाइज द एरिया ऑफ पेल्विस एंड पेरिनियम. इतना बेसिक याद हो तो दिस विल हेल्प यू इन एटलीस्ट 50% आपका काम हो गया. इट टेल्स अस व्हाट वुड बी द ब्रांचेस. जैसे कि पेल्विस में विच आर द ऑर्गन्स इन पेल्विस? इट इज अ ब्लैडर, इट इज अ यूट्रस, इट इज अ रेक्टम एनल कैनाल. तो उनकी आर्टरीज होंगी लाइक वेसाइकल आर्टरी, लाइक वेजाइनल आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी इन फीमेल, like the inferior rectal artery or middle rectal artery, वो सब होंगे. Okay, so interiliac artery थोड़ा सा complicated होता है. Here we will see its branches. Now what happens is it divides into anterior and posterior divisions. Posterior division में remember a mnemonic PILS, pills, PILS, ILS 3 branches हैं. What are these 3 branches? अब यहाँ पे आप देखिए in this particular image, this is the interiliac artery. हमारी interiliac artery ये जा रही है, ये है बाहर निकली हमारी कॉमन इलियक. दिस इज अ कॉमन इलियक. फिर बाइफर्केट्स इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल. ठीक है, फिर इंटरनल की दिस वन ओवर हियर विल बी द पोस्टीरियर डिविजंस. आई एम हाइलाइटिंग देम. इलियोलंबर, लेटरल सैक्रल एंड सुपीरियर ग्लूटियल. ये पोस्टीरियर डिवीजन से 3 ब्रांचेस निकली. ओके, इलियोलंबर, देयरफॉर दे आर नोन एज पिल्स, PILS. आई से क्या है? आई से वी हैव द इलियोलंबर, एल से लेटरल सैक्रल, एस से सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी. ये 3 ब्रांचेस याद रखिए फ्रॉम द पी से पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरमीडिएट. रेस्ट ऑल द ब्रांचेस दे कम फ्रॉम एंटीरियर डिवीजन. क्या ब्रांचेस आएंगी? जाहिर सी बात है, फॉर द यूरिनरी ब्लैडर, फॉर द यूट्रस, फॉर द वेजाइना इन फीमेल्स ऑब्वियसली, फॉर द रेक्टम, लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम. ठीक है, तो यू हैव द मिडिल रेक्टल आर्टरी एंड अदर्स, मिडिल रेक्टल एंड अदर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, as this internal iliac also supplies the perineum, याद रखिए, इनके अलावा there is one more important branch, that is the internal pudendal artery. This supplies basically core perineum, internal pudendal artery, and also one branch goes to the lower limb obturator artery. तो ये मैं सारी ब्रांचेस हटा नहीं रहा हूँ, जस्ट रिमेंबर अ mnemonic PILS याद रखिए फॉर द पोस्टीरियर डिवीजन. और याद कैसे रखें सर? फिर ILS से क्या क्या होगा? देखो बेटा, यहाँ पर इलियोलंबर, लेटरल सैक्रल, ग्लूटियल, लंबर, सैक्रम, ग्लूटियम, ये दीज आर स्ट्रक्चर्स लाइंग पोस्टीरियरली इन आवर बॉडी. लंबर वर्टिब्री कहाँ है? पीछे. सैक्रम कहाँ है? पीछे. ग्लूटियल रीजन पीछे है. Therefore PILS, try to remember this. Rest all the branches from anterior division. उसमें एक दो नाम याद रखें आपको. क्या? One is the internopudendal, that is for the perineum. ये याद रखिए. Q. They can ask you which lower limb vessel comes directly from the interiliac artery supplying the lower limb obturator artery. वो आप याद रखिए. ठीक. बाकी ब्रांचेस इतना बेसिक आइडिया रखिए, काफी है. Rest all the branches are already labeled over here.
चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रॉम दिस आर्टरी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द ग्लैंड्स, द सलाइवरी ग्लैंड. This is a cadaveric image, as you can obviously see. This gland over here, ये है हमारा parotid gland, the largest salivary gland. ठीक, थोड़ा zoom करते हैं इसको. The structures inside the parotid gland, they are crucial. The facial nerve actually runs inside the parotid gland. हमें पता है कि facial nerve parotid gland के अंदर है. देखो parotid gland की कोई सर्जरी जब होती है, you should take care not to damage the facial nerve, because facial muscles paralyzed हो जाएंगी. And facial nerve forms a plane which divides the parotid gland into superficial and deep part. पता है सबको. Now these nerves which you can see coming from the outside, these nerves, these are all branches of facial nerve. अब यहाँ पे और चीज देखते हैं क्या क्या हमें दिख रही हैं. This muscle over here, which muscle? This is the masseter muscle. ये masseter muscle है, ठीक है. There are various facial muscles. तो पहचानी पहले parotid gland का है. Then various facial muscles also we can see. For example, एक दो देख लेते हैं. ये important muscle है. Orbicularis क्या है? Oris है या oculi है? This is orbicularis oculi. Oris होगा मुंह के चारों तरफ. This will be orbicularis oris. ठीक. And these are all zygomaticus major minor. ठीक. Now आप यहाँ कुछ और स्ट्रक्चर भी देख लीजिए. This is a tortuous vessel. कौन सी वेसल होगी? फेशियल आर्टरी या वेन है? This is facial artery. Running behind it, can you see this? This is a facial vein. ये भी देख लो. Now parotid gland हमने बाहर देखा. Now parotid gland के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं वो देखते हैं इस इमेज में. This is a cut section. Which section? Transverse section. आगे बेटा ये mandible है. Therefore this is the anterior aspect. आगे मैंडिबल है, पैरोटिड है, पीछे क्या है? मेस्ट्रॉइड. दिस इज द मेस्ट्रॉइड पार्ट, दिस इज पोस्टीरियर एस्पेक्ट. कट सेक्शन लिया है. दिस ओवर हियर इज द पैरोटिड ग्लैंड. ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड है. कैन यू सी द फेशियल नर्व रनिंग? दिस इज द फेशियल नर्व. कैन यू सी दिस रनिंग? सो इट डिवाइड्स द पैरोटिड ग्लैंड इनटू सुपरफिशियल डीप पार्ट. और स्ट्रक्चर्स क्या है? इफ यू आर डाइसेक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड, ऑब्वियसली यहीं से डाइसेक्ट करोगे इन डिसेक्शन और इन सर्जरीज. सो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा फेशियल नर्व अपार्ट फ्रॉम द लिम्फ नोड, क्योंकि पैरोटिड लिम्फ नोड्स भी होती हैं. Very important lymph nodes which drain the lateral part of the forehead, lateral part of the cheek, है ना. ये सब lateral part of the eyelids, they all drain into parotid lymph nodes. So parotid lymph nodes बहुत important है, and therefore they form an important DD for lymphoma as well. कभी यहाँ पे swelling हो गई ना, you have to do investigations to rule out is it a parotid tumor or is it a lymphoma, because lymph node उसके gland के अंदर है. Important clinical point. जब आप बाहर से अंदर जा रहे हैं, when you are dissecting from superficial to deep, obviously after removing all the skin and fascia, because यहाँ पे investing part भी आता है parotid-mesenteric fascia, then as you enter inside the gland you will get the lymph node. Then first structure which you will get after lymph node is the facial nerve. उसके डीप में आप जाओगे आपको वेन मिलेगी, retromandibular vein. उसके डीप में when you go more you find the artery as well. So these are very very important structures inside the gland, पता होना चाहिए. Okay, now just deep to this पैरोटिड ग्लैंड पूछेंगे इसके जस्ट मिडल में क्या स्ट्रक्चर है. इसके जस्ट मिडल में यू हैव द होल स्टाइलॉइड अपैरेटस. यू हैव द होल स्टाइलॉइड अपैरेटस. व्हेन वी से स्टाइलॉइड अपैरेटस, हमारा मतलब ये है कि प्रोसेस के साथ सारे मसल्स, लिगामेंट्स, जो भी स्टाइलोफेरिंजियस, स्टाइलोग्लॉसस, जो भी स्टाइलोफेरिंजियस है, एनी मसल रिलेटेड टू द स्टाइलॉइड, वो सब वहाँ पे अटैच है, इंक्लूडिंग द स्टाइलोइड लिगामेंट्स एंड ऑल. उसके मिडल में आप जाओगे तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. क्यों? देखिए क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई डीप पार्ट ऑफ द ग्लैंड इट स्टार्टेड टू एनलार्ज. ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज एनक्रोचिंग टुवर्ड्स द फेरिंग्स, क्योंकि यहाँ पे फेरिंग्स भी है. अंडरस्टैंड द एनाटॉमी. एनाटॉमी को सिर्फ देख के रटना नहीं, आपको समझना है कि हाँ इसके आसपास ये स्ट्रक्चर्स हैं. अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होता है, इफ देयर इज अ swelling over here or growth over here, it might reach near to which structures. ठीक, तो यहाँ से ये चीज क्लियर होगी. अगर मैं यहाँ पर एक वो बना दूं, एक ऐसे कवरिंग बना दूं, व्हाट इज दिस? इट इज कवरिंग द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड द इंटरनल जुगुलर वेन. बेसिकली क्या बन गया ये? दिस आई हैव ट्राइड टू मेक द कैरोटिड शीथ बन गई यहाँ पर. देखिए ये भी यहीं पर. ओके, सो रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू द पैरोटिड ग्लैंड. फेशियल नर्व, डज इट सप्लाई पैरोटिड ग्लैंड? आंसर इज बिग नो. पैरोटिड ग्लैंड इज सप्लाइड बाय द ओटिक गैंग्लियन, है ना. उसके लिए वी हैव द लेसर पेट्रोसल नर्व एंड द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, वो एक अलग चीज है. फॉर द 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियाज ऑफ द हेड एंड नेक, वो याद रखना. दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक, चलिए तो पैरोटिड ग्लैंड की बात ये हो गई. आगे बढ़ते हैं. दिस विच इमेज, दिस इज शोइंग यू वेरी स्ट्रक्चर्स related to the submandibular gland and the anatomy around it. जैसे look at the two nerves over here. Which two nerves? Look at the lingual nerve and look at the hypoglossal nerve. And the structure look over here is the submandibular duct. ये तीन चीजों को जरा ध्यान से देखिए. Look at the crossing of lingual nerve to the submandibular duct. यही क्वेश्चन आया था. Why? Because submandibular duct सबको पता है कि it is very common to develop stones, hyalolithiasis. Right? तो यहाँ पे stones हैं, तो submandibular those days obviously you have to do a surgery around this duct. They can ask you which nerve can be injured. पूछा भी गया. That doesn't mean asked also. Lingual nerve is the answer.
लिंगुअल नर्व उसके नीचे हाइपोग्लॉसल नर्व, हाइपो क्यों, क्योंकि भाई हाइपो मींस नीचे, टंग के नीचे से जा रही है हाइपोग्लॉसल नर्व, और यहीं पर आपका कहीं रखा होगा सबमैंडिबुलर गैंग्लिया. ओके, बिकॉज लिंगुअल नर्व आल्सो कैरी द कॉर्ड टिम्पनी, यहाँ पे रिले करेंगे, दे विल सप्लाई द सबमैंडिबुलर एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड फ्रंट. बट यहाँ पे रिलेशन समझिए. देन लुक एट दिस इंपॉर्टेंट वेसल, विच वेसल, लिंगुअल आर्टरी. ये कहाँ जा रही है, इट गोज डीप टू दिस मसल. ये कौन सी मसल है, दिस मसल इज हायोग्लॉसस. सो लिंगुअल आर्टरी branch of ECA, it supplies the tongue, it goes deep to hyoglossus. कहाँ जा रही है, it is going deep to HG. And these structures, lingual nerve, hypoglossal nerve, duct, ये सब कहाँ जा रही हैं, these are superficial to HG. These are super HG मैं बोल रहा हूँ, that is hyoglossus muscle. Relation याद रखिए, look at the image. One more over here is the cross section. Again, not just a parotid, because the cross section वैसा ही है. आगे you can see this is the mandible over here, this is the parotid gland over here, पीछे mastoid होगा. But they, in this image, they also included the submandibular gland also. कहाँ पर submandibular gland? This is the submandibular gland, SM. जी. Relation देख लिया आपस में. Few important things. Note over here are. Which artery grooves the submandibular gland? पहला question, facial artery. Question बन गया आपका. Facial artery grooves the submandibular gland. Which structures divide the submandibular gland into two parts? It is the mylohyoid muscle over here. देखिए बाहर वाला superficial part है, अंदर वाला deep part. Okay, so and you can see the hypoglossal muscle over here. Then another question, which structure separates the parotid gland from the submandibular gland? देख के बताइए इमेज में. इमेज में if you see, we can look at this ligament between. अब देखिए याद कीजिए, styloid process was where it was just medial to the parotid gland. वहां से there goes a ligament to the angle of mandible, अंदर से, from inside. That is stylomandibular ligament. Basically, this structure is separating these two structures, the parotid gland from the submandibular gland. उनके बीच में क्या है, उनके बीच में you have this, the stylomandibular ligament. Surgery में this is going to be very important, right? तो बाकी images में आप देखते रहिए, questions they start to develop like this only. Okay, चलिए बाकी their nerve supply, so obviously important. जैसे अगर मैं लिख दूं parotid gland और submandibular gland, दो major glands हैं. इसमें जो ganglia है, that is otic ganglia, you have the submandibular ganglia. ठीक ना. इसकी प्री गैंग्लियन नर्व कौन सी है, फॉर ओटिक गैंग्लिया इट इज दी 9th की ब्रांच है, लेसर पेट्रोसल नर्व, विच इज द प्री गैंग्लियन फॉर सबमैंडिबुलर. इसकी 7th की ब्रांच है कौन सी, कॉर्डा टिम्पनी नर्व, याद रखिए. वैसे ही पोस्ट गैंग्लियोनिक ब्रांच कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड में यू हैव द 5th की ब्रांच है V3 की, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व. यहाँ भी V3 की ब्रांच है, बट ब्रांच इज डिफरेंट, लिंगुअल नर्व. बेसिक याद रखिए. ओके, so let's move ahead. Let's come to the next image over here. Germ cell layer derivatives. Germ layer derivatives हैं सारे, इसको आपको रीड करना पड़ेगा. 2 slides हैं ये, which are showing us surface ectoderm, ectoderm, mesoderm and endoderm. 2-3 बार रीडिंग मारनी पड़ेगी. एक आध क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं. One question might come from here. Ecto, meso, endo, and over here you are looking at what? Neural crest, again hiled. And notochord का तो एक होता ही न्यूक्लियस पल्पोसस, अदर्स आर आल्सो देयर लाइक मेम्ब्रेन टेक्टोरिया है, एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस, बट मेनली न्यूक्लियस पल्पोसस. वहां पे हमने क्या देखा था, सरफेस एक्टोडर्म प्रीवियस में, यहाँ पे न्यूरो एक्टोडर्म, न्यूरल ट्यूब, एंड फाइनली एंडोडर्म कंटिन्यूड ओवर. इसमें कुछ रीडिंग्स माननी पड़ेंगी हमें, विच आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. 2-3 मैं हाईलाइट कर दूं, चाहे गट फीलिंग माइट कम इन अ क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल एक्टोडर्म में याद रखिए, ये हमारा इनर ईयर पूछ सकते हैं. ठीक है, एक्टोडर्म गिव्स राइज टू द लेंस ऑफ आई. एक्टोडर्म कह रहा हूँ, सरफेस एक्टोडर्म, नॉट द न्यूरो. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, राथकेस पाउच, याद रखो. देन मीसोडर्म में दे कैन आस्क यू अबाउट द एड्रिनल कॉर्टेक्स और द स्प्लीन, याद रखिए. ड्यूरा मैटर पूछ सकते हैं. एंडोडर्म में एवरीथिंग टू द कोर. अभी हम वी विल लुक एट द फेरेंजियल आर्चेस, वहाँ फेरेंजियल पाउचेस हैं, ये यहीं पे रिवाइज कर लो, वहाँ पे अगेन वी विल रिवाइज इट. दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट पाउच, दिस इज फ्रॉम द सेकेंड पाउच. ठीक है, दिस इज फ्रॉम द थर्ड पाउच. पैराथायराइड ग्लैंड भी थर्ड और फोर्थ दोनों से आता है. द इंफीरियर पैराथायराइड फ्रॉम द थर्ड पाउच, द सुपीरियर पैराथायराइड फ्रॉम द फोर्थ पाउच. यहाँ पे समझ लीजिए. और देखते हैं नेक्स्ट इमेज में, न्यूरल क्रेस्ट में एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. यहाँ क्यों इसलिए लिखा है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, न्यूरल क्रेस्ट. ये तो इकलौता है पल्पोसस. न्यूरो एक्टोडर्म में ऑब्वियसली सीएनएस वही पूरा. न्यूरो हाइपोफाइसिस व्हाट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. ठीक है, बाकी एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पढ़ सकते हैं. एंडोडर्म इज एंडोडर्म, सारे ऑर्गन्स यहाँ पे. एक यहाँ पे याद रखिएगा, द क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम हियर. ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं. अगला टॉपिक क्या आ गया, अगला टॉपिक आ गया हमारा फेरेंजियल आर्चेस, है ना. हाउ मेनी आर्चेस देयर,
5 arches. For example, the first arch, second arch, third arch, fourth arch, fifth hoti, but then it disappears. So you have sixth arch. What is the nerve supply? We should know. First arch nerve supply क्या है? V3. Second arch की 7th nerve. Third arch की 9th nerve. Fourth, 6th की superior laryngeal and recurrent laryngeal, both branches of 10th nerve. Now if I ask you, they come under which nuclear column? जो हमने पढ़ा था cranial nerve nuclear column. They come under which nuclear column? Spatial, visceral, efferent. याद रखो. Here the color coding showing you the various, the bones and cartilage. Color coding है. Red color ये first arch हो गया. Second blue. Third is this. Fourth and sixth are this. Number लिखे हैं यहाँ पे 4th and 6th. So it goes in a sequence में जाता है. First two is second, third, fourth, sixth, like this. Here you see the again a coronal section of all the arches on both the sides. So एक coronal section लिया गया, बाहर ectoderm है, अंदर endoderm है. So if you look at this coronal section, remember one thing, बाहर की तरफ ectoderm है. Okay, अंदर की तरफ you have the endoderm, and between you have the mesoderm or mesenchyme. Now here remember, अंदर देखिए 5 उंगलियां के बीच में कितने गैप है? 4 गैप है. So like this we have 5 arches and between them you have 4 gaps. अंदर की तरफ they are known as pouches. So this is the first pouch, second pouch, third pouch, fourth pouch. क्वेश्चन बताता है what are the derivatives. अभी हमने किया है जर्म सेल डेरिवेटिव्स में, वही दोबारा यहाँ पे समझो. For example, first pouch कह रहा हूँ, pouch is endoderm, auditory tube और अपना हो गया यहाँ पे middle ear, ये first pouch आ गया. Second pouch क्या है? tonsillar fossa, second pouch. थर्ड पाउच क्या है? इंफीरियर थायराइड ग्लैंड एंड द थाइमस, दैट इज 3 and 3. इसको ऐसे याद करना है अपने को, THIRD. TH इज थाइमस, I इज इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, एंड फोर्थ पाउच इज सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, एंड इसी से अल्टीमो ब्रैंकियल बॉडी आती है व्हिच गिव्स राइज टू द पैराफोलिकुलर C cells ऑफ थायराइड. वो जो कैल्सिटोनिन बना रहा है, इनको याद रखना है. Then obviously the second arch, अगर आप बाहर से देखें ectoderm part, the second arch goes down and covers everything. It might leave a few cervical or branchial sinus over here. तो यहाँ पे कुछ branchial sinus छूट सकते हैं. They are seen where, and in a patient, in a person, you can see them in the anterior border of the sternocleidomastoid muscle. Branchial cyst opening हो रही है branchial sinus. कहाँ पर मिलेगा? In front of the anterior border of sternocleidomastoid. ये याद रखना है आपको. Nerves आपने समझ ली, ये समझ लिया. Then each arch will have its own artery. उसे बोलते हैं pharyngeal arch artery. यहाँ देखिए, इस पे रिसेंटली बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाई टॉपिक हो गया. फॉर एग्जांपल इफ यू सी ओवर हियर, कितनी आर्च थी? 5 आर्चेस, 1 2 3 4 6. फिफ्थ आर्च डिसअपीयर, तो ना उसकी कोई आर्टरी, ना उसकी कोई मसल है, ना उसकी कोई नर्व. अब देखिए, फर्स्ट आर्च की आर्टरी, सेकंड आर्च की आर्टरी डिसअपीयर, खत्म. थर्ड आर्च की आर्टरी गिव्स राइज टू कैरोटिड्स, बेसिकली इंटरनल कैरोटिड एंड कॉमन कैरोटिड. ये है थर्ड आर्च आर्टरी, 3 नंबर लिख रहा हूं, बोथ साइड्स कॉमन. अब 3 के नीचे 4. फोर्थ आर्च गिव राइज टू अ पार्ट ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी. तो राइट लेफ्ट में डिफरेंस है. आर्च ऑफ एओर्टा इट कम्स फ्रॉम द लेफ्ट फोर्थ, टोटल आर्च नहीं, छोटा सा पार्ट आर्च ऑफ एओर्टा. राइट साइड फोर्थ आर्च आर्टरी गिव्स राइज टू अ पार्ट ऑफ राइट सबक्लेवियन. फिफ्थ आर्च डिसअपीयर हो गई, तो 5 नंबर डिसअपीयर ही है. 6 देखिए ध्यान से, सिक्स्थ आर्च आर्टरी गिव्स राइज टू डक्टस आर्टीरियोसस, 6L लेफ्ट साइड में, एंड लेफ्ट क्या बोले पल्मोनरी आर्टरी, ये भी L6 लेफ्ट 6 आर्च आर्टरी. राइट 6 से सिर्फ आई राइट पल्मोनरी आर्टरी. तो राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है, इट्स कमिंग फ्रॉम द राइट 6th आर्च आर्टरी. हमें क्या याद करना, देखिए फर्स्ट सेकंड खत्म. थ्योरेटिकल देखिए ना, आस्क यू फर्स्ट आर्च से फ्यू डेरिवेटिव्स ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, स्टेपिटल आर्टरी, हाइड आर्टरी सब आ रही है फर्स्ट सेकंड आर्च से, कोई जरूरत नहीं. थर्ड आर्च आर्टरी कैरोटिड, कैसे याद करना है? C से कैरोटिड होता है, इट इज अ थर्ड लेटर, ABC, थर्ड आर्च आर्टरी. कैरोटिड के नीचे क्या है? आर्च ऑफ एओर्टा है, वहीं से निकल रही कैरोटिड. तो फोर्थ आर्च आर्टरी क्या है? इज लेफ्ट साइड में, बिकॉज़ आर्च गोइंग टू लेफ्ट साइड. सो लेफ्ट फोर्थ इज आर्च ऑफ एओर्टा पार्ट, और राइट में यहीं से निकली, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकली, राइट सबक्लेवियन, राइट फोर्थ. फिफ्थ बात ही खत्म. अब इफ यू रिमेंबर, अगर मैं ऐसे ही आपको ग्रॉस एक हार्ट बना के दिखाऊं यहाँ पर, दिस दी आर्च ऑफ एओर्टा, आपको याद हो तो ये थी यहाँ नीचे पल्मोनरी ट्रंक. इफ दिस इज कमिंग फ्रॉम द फोर्थ आर्च, तो नीचे क्या होगा? 6th होगा, 5th तो ही. देखो 6th आर्च आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी, इसका एक रेमिनेंट है क्या? यही क्वेश्चन आया था, दिस द डक्टस आर्टीरियोसस, आफ्टर बर्थ बिकम्स लिगामेंटम आर्टीरियोसम. इसकी वजह से क्या होता है, दैट 6th आर्च आर्टरी की जो नर्व है, विच नर्व? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ऑन द लेफ्ट साइड गोज बिलो. इसकी आप नेक्स्ट इमेज देखिए, ये आपका क्वेश्चन आया था. हियर द आर्टरीज प्लस द नर्व्स आर शोन, विच नर्व? वेगस नर्व. क्वेश्चन ये था, ड्यू टू विच डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर द लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, कौन सी है? ये वाली है लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल.
the left recurrent laryngeal is slightly inferior in relation to the right recurrent laryngeal. राइट साइड ये रही राइट recurrent laryngeal. किसकी वजह से? वजह जो थी, द रीजन वाज दिस स्ट्रक्चर. ये क्या है? डक्टस आर्टेरियोस. किससे बना है? दिस कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट सिक्स्थ फेरिंजियल आर्च आर्टरी. ये आपका क्वेश्चन था, ये आंसर था. आप देख लीजिए डिफरेंस. राइट साइड में बिकॉज देयर इज नो डक्टस आर्टेरियोस, देयरफॉर राइट recurrent laryngeal ऊपर खिसक जाती है एंड इट गोज बिलो. ये कौन सी आर्टरी होगी? फोर्थ आर्च आर्टरी राइट साइड में. इट इज अ राइट सबक्लेवियन आर्टरी. ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं. समझिए कंसेप्ट, समझिए. दोबारा देखें, गिव यू एन इमेज, दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन. ध्यान देना है. ओके, चलिए जी आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे. Let's see over here the parts of the urethra or other structures over here. Male urethra particularly. Female urethra में इतना complicated है नहीं. It is hardly 4 to 5 centimeter. Here look at some structures. For example, let us start with say testes and its continuation, epididymis and vas deferens. Vas deferens we say length is around 40-45 centimeter. Look at its total length. ये पहले पूरा scrotum से होता हुआ it will go through the inguinal canal, then it come out in the inguinal canal. Spermatic cord में vas deferens goes around over here, then it goes above the bladder, then goes behind the bladder, then it meets the seminal vesicle, and finally it forms what? Ejaculatory duct. This is the whole root of vas deferens. समझिए. But now look at the urethra. From the bladder, male bladder particularly, as you go down, there is a prostate gland. तो यहाँ पर कौन सा urethra है? Prostatic urethra. उसके नीचे कौन सा urethra होगा? Over here membranous urethra. Remember the prostatic and the membranous urethra, they are a part of posterior urethra. Clinically. उसके नीचे आप देखोगे this is the penis over here. Penis has a root and a body. यहाँ पर जो urethra होगा that will be slightly different. The urethra over here will be the bulbar urethra. इसको बोलोगे आप spongy urethra या फिर penile urethra. This bulbar urethra and the spongy or penile, they are a part of anterior urethra. Bulbar urethra we all know. ये हमसे क्यों पढ़ा रहे हैं? Because they are clinically important. Urethral rupture. ठीक है. The bulbar urethra is the most, it is just below the urogenital diaphragm. अब diaphragm कहाँ होगा? Diaphragm भी आप समझ लो, diaphragm बेटा यहाँ रखा है, urogenital diaphragm. So it might get rupture. तो समझिए urethra के parts. Prostatic urethra, membranous urethra, they are more proximal. They are just below the bladder. They are part of posterior urethra. They are lying in which perineal pouch? Deep perineal pouch. है ना? Bulbar urethra and spongy are more anterior. They are lying in the superficial perineal pouch. You are looking at a vas deferens as well. अब इसी पूरे यूरेथ्रा को अगर हम एक सेक्शन सामने सामने ले लें, चारों को डिफरेंस कर लें, तो वही रिवीजन आपको हो जाता है. और यूरेथ्रा इज अ टॉपिक मोस्ट ऑफ अस मिस एनाटॉमिकली, है ना. सो ब्लैडर वाज दिस. नाउ लुक एट द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. ये हो गया हमारा पीयू प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड दिस द मेम्ब्रेन्स. ये दोनों लिखे हैं यहाँ पे. दे आर पार्ट ऑफ डीप पेरिनियल पाउच एंड दे आर पोस्टीरियर. यहाँ पे बेटा बल्ब, दिस द बल्ब. सो देयरफॉर दिस द बल्बर यूरेथ्रा. And this will be your spongy part of urethra, and this right spongy urethra. So bulbar and spongy किस में आएगा? They are coming in the anterior urethra, है ना, and they are continuing down. Anatomy of penis भी आप देखिए, you have the bulb of penis that continues into what? Corpora spongiosum, and you have the crus of penis continues into corpora cavernosa. नहीं, then it continues down like this. तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए. Ultimately prostatic urethra पे question might come. बहुत सालों से आया नहीं, बट इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में यू शुड नो द ओपनिंग्स. इन द सेंटर दिस इज नोन एज, सेंट्रल पार्ट को इसको बोलते हैं बेटा यूरेथ्रल क्रेस्ट. देयर आर 3 ओपनिंग्स ओवर हियर. लुक एट दीस 3 ओपनिंग्स, याद रखिए. अपर वन इज अ यूट्रिकल, अ रेमनेंट ऑफ पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट बोल सकते हैं. यहाँ पे लिख लूं मैं, इट इज अ रेमनेंट ऑफ पैरामीसोनेफ्रिक डक्ट व्हिच इज द मेन डक्ट फॉर द फीमेल. और नीचे 2 ओपनिंग है, दे आर फॉर द एजैकुलेटरी डक्ट. दे आर इन द क्रेस्ट. ये सब बेटा क्रेस्ट में खुल रहा है, रिमेंबर दिस. Sides and what you feel over here or what you see in the urethra is the sinuses. ये sinuses हैं, urethral sinuses बोलते हैं. What opens over here basically is the gland. You can see this purple color, prostate gland. इनकी सारे duct खुल रहे हैं. Where in the sinus? Sinuses opening of prostate gland के ducts यहाँ खुल रहा है. याद रखो इमेज. They can give you an image over. And this particular area, just to add on over here, this particular area is known as what? Is known as the seminal colliculus. सेमाइनल कॉलिकुलस इसको ही बोल देते हैं. ठीक, तो याद रखिए, देयर इज अ क्रेस्ट इन बिटवीन व्हिच हैव 3 ओपनिंग. क्रेस्ट बना क्यों? पीछे प्रोस्टेट रखा हुआ है, राइट. दे हैव द क्रेस्ट इन बिटवीन व्हिच हैव द यूट्रिकल एंड 2 एजैकुलेटरी डक्ट. अब एजैकुलेटरी डक्ट किससे बनी? दिस एजैकुलेटरी डक्ट इज बेसिकली फाउंड बाय क्या? वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल की डक्ट से बनी ना. एंड ऑन द साइड साइनसेस यू हैव द प्रोस्टेटिक ग्लैंड के जो डक्ट्स हैं वो खुलेंगे.
याद रखिए इसके एनाटॉमी भी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज व्हाट, दिस इज द आवर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, VIEW है ना। सो BPS, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट, दोनों साइड 10-10 होते हैं, 10 ऑन द राइट, 10 ऑन द लेफ्ट साइड। दे आर द फंक्शनल एनाटॉमिकली एंड सर्जिकल यूनिट। भाई इंस्टेड ऑफ टेकिंग द होल राइट लंग में, देयर इज, इमेजिन देयर इज अ ट्यूमर ग्रोथ और देयर इज एनी इन्फेक्शन और एपस हो रहा है, instead of taking the whole right superior lobe or inferior lobe out, you can particularly take out a segment. If the pathology is only limited to that segment, तो segment पता होना चाहिए। our discussion बताते हैं। तो राइट लंग में how many lobes are there? We all know there is superior lobe, there is a middle lobe, there is an inferior lobe. superior lobe में there are 3 segments, middle में 2, inferior में 5 segments. left lung में you have a superior lobe and an inferior lobe, they both have 5 segments. उनके नाम ले लिए होंगे, अब समझेंगे क्या क्या है। For example, over here there is a apical, posterior, anterior. These are 3 segments of the right superior lobe. Right middle lobe में there are 2 segments, कौन से? Lateral, medial. Inferior में all are having the name basal, basal, सबके सब basal हैं। Same left side में, left side difference है कि there are 5, तो apical, anterior, posterior तो वही है, superior, inferior we call them as lingular segment. क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें बोलते हैं हम लोग lingular segment because they are around lingula, lingular segment। और नीचे inferior में 5 are same, जो राइट में लेफ्ट में। समझो इसको, सेगमेंटेक्टमी एनाटॉमिकली सर्जिकली इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट में समझिए, धीरे धीरे समझिए। यहाँ पर वी आर लुकिंग एट अ राइट लंग, लेटरल व्यू। दिस इज द राइट लंग, आई एम राइटिंग आर ओवर हियर। ये एंटीरियर व्यू है बेटा, पोस्टीरियर व्यू। समझो चीज को। अगले में यू आर लुकिंग एट, यू विल बी लुकिंग एट अ कैडावरिक इमेज। दिस इज द हॉरिजॉन्टल फिशर, दिस इज द ऑब्लिक फिशर, वो ऑब्लिक फिशर है। लुक एट द सेगमेंट्स, ऊपर एपिकल है, फिर पीछे पोस्टीरियर, आगे इंटीरियर, लेटरल, मीडियल, और ये सारे सारे बेसल सेगमेंट। नीचे आ जाओ बेटा लेफ्ट लंग में। दिस इज अगेन योर एंटीरियर, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट, दिस ओनली वन फिशर, ऑब्लिक फिशर है ये। तो 5 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, या 4 देखना है, बट एक ऑन द अदर साइड। What we also learn from here is, एक चीज और हम यहाँ सीख सकते हैं, वो क्या है कि if you look at anterior view, basically all the anterior basically upper lobe, और पीछे maximum is the posterior lobe। यहाँ भी सेम है, पीछे maximum is the posterior, posterior maximum is the inferior lobe, आगे की तरफ maximum superior या middle lobe। इसको आप कैडावरिक इमेज में देखिएगा और समझाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। What we are looking over here, the different color coding beautiful image over here is the right lung। ये हम right lung देख रहे हैं, right lung। व्यू बता दूं आपको मैं, ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है। एक एक व्यू समझो, कुछ सेगमेंट्स यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, समझते हैं। फिशर समझो पहले, सबसे पहले फिशर समझते हैं। दिस इज द हॉरिजॉन्टल फिशर, और नीचे जो ये कट रहा है अलग, ये ऑब्लिक फिशर है। कुछ सेगमेंट समझिए यहाँ पर क्या क्या है। देखिए, दिस ऑब्वियसली एपिकल होगा, आगे है तो एंटीरियर सेगमेंट होगा। भाई राइट सुपीरियर लोब में देखो 3 सेगमेंट्स, एपिकल, एंटीरियर और पीछे पोस्टीरियर होगा। यही पीछे व्यू है तो ये पोस्टीरियर सेगमेंट होगा। अब यहाँ देखिए नीचे आप आओगे तो दिस लोब इज विच लोब? देखिए ये वाला है हमारा सुपीरियर लोब, ये वाला है बेटा हमारा मिडल लोब। तो दिस द मीडियल सेगमेंट ऑफ द मिडल लोब, ये लेटर सेगमेंट होगा मिडल लोब का। तो देखिए एंटीरियर व्यू में, बिकॉज़ दिस होल बीइंग द एंटीरियर व्यू, यू बेसिकली सीइंग द सुपीरियर मिडल लोब। वहीं आप पीछे आ जाओ पोस्टीरियर व्यू में, यहाँ पर टेल मी और थिंक अबाउट विच सेगमेंट इज दिस। ये सेगमेंट है इंफीरियर लोब का। दिस इज द एपिकल सेगमेंट ऑफ इंफीरियर लोब। किस लोब का? इंफीरियर लोब का। देखिए दीज आर ऑल द बेसल सेगमेंट, सारे बाकी बेसल सेगमेंट्स नीचे जो भी है, ये आपकी राइट लंग। ध्यान से देखिए एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। एंटीरियर में दीज आर द सुपीरियर लोब, मिडल लोब, पीछे पूरा का पूरा ये है बेटा इंफीरियर लोब। वही चीज आप कोरिलेट करो लेफ्ट लंग में। दिस नाउ वी आर सीइंग एट द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में थिंग्स आर लेस कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज़ देयर इज ओनली वन फिशर। 2 ही लोब होते हैं मेनली। So this is the anterior view, that is the posterior view। आप समझ सकते हो आराम से। This is the apical segment, आगे की तरफ एंटीरियर होगा। This will be the superior inferior lingular segment। अब पीछे आप आ जाओ, पीछे वही है posterior में, this will be the apical segment of the inferior lobe। ये सारे basal segment, पहचानी चीजों को। And if you look over here, anteriorly सारा का सारा क्या है? superior lobe ही है। पीछे maximum is the inferior or the posterior lobe। inferior lobe बोल दो, ठीक। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड बिटवीन यहाँ पर आपका आ जाएगा फिशर, आया था यहाँ पर आता है फिशर। अगेन रिमेंबर सरफेस मार्किंग रिवाइज कीजिएगा ऑफ द फिशर्स। एंड हार्ट में मेन ऑर्गन्स की सरफेस मार्किंग। अगेन आई विल अर्ज यू, वी हैव एक्स्ट्रा वीडियोस इन एनाटॉमी, there we have discussed all the surface markings
एक्स्ट्रा जो क्लिनिकल वीडियोस में जरूर जाके देखिए if you have time in high speed, समझिए उसको. You will gain lot of anatomical knowledge, and not just anatomical knowledge. Anatomy itself is not of much use. Now question में आएगी, एग्जाम में आएगी नहीं. Relevant clinical anatomy हमें समझनी है. The time has come to understand the relevant clinical anatomy. Time has come कि अभी नहीं, 2-3 साल पहले से आया हुआ है. So that is what should be our main focus. I hope you understand this. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला टॉपिक देखिए, वेसल्स, कोरोनरी वेसल्स. ठीक, ऑब्वियसली वी आर लुकिंग एट हार्ट. मेन वेसल जो आगे आएगी एंटी इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी. दिस रन्स इन द बिटवीन द इंटरवेंट्रिकुलर सर्कल्स. इसको एलएडीबी बोलते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, वी ऑल शुड बी नोइंग. और ये आ रही है हमारी साइड में सर्कमफ्लेक्स आर्टरी. तो इसके पीछे कौन सी आर्टरी छुपी हुई है यहाँ पर? दैट इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. एंड दिस वन ओवर इज राइट कोरोनरी आर्टरी, आरसीए. ये एलसी नहीं दिखती बिकॉज एलसीए, एज सून एज एलसीए बिकम्स, इट बाइफरकेट्स इनटू टू वेसल्स. तो एलसीए छुपी रहती है पल्मोनरी ट्रंक के पीछे. Okay, this over here, remember, is a pulmonary trunk. This is the aorta, लिखा है यहाँ पर. This is the aorta. So LCA basically the initial part, because इतना ही होता है LCA. Then it suddenly bifurcates into two important vessels. LCA छुपी रहती है behind the pulmonary trunk. You can't see it. It is there, but you are not able to see it in the naked eye. Unless and until आप pulmonary trunk को उठाइए. Bifurcates into LAD, जो कि नीचे जा रही है, interventricular and circumflex artery, LCX. RC सीधे आपको दिख जाएगी, सामने आती है. This you can see RC. पहचानी चीजों को. कोरोनरी वेसल्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर द वेरियस ब्रांचेस. डिटेल में सब कुछ है, बट एटलीस्ट ट्राई टू रिकॉग्नाइज इट. नेक्स्ट इमेज देखिए, क्या क्या मेन और ब्रांचेस हमें समझ में आती हैं यहाँ पर. अगेन दे आर शोइंग एलसीए बट हिडन. सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एंटी इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये दीज आर कॉमनली इन्वॉल्वड इन दिस एथेरोस्क्लेरोसिस. सभी इंपॉर्टेंट है. एंड यू कैन सी द आरसी ओवर है. Running between which two chambers? Chamber देख लो बेटा, right auricle, right atrium, this is right ventricle and this is left ventricle. Left atrium कहाँ है? It is present posteriorly, forms the base of heart. So left atrium आपका कहीं यहाँ रखा होगा पीछे. Okay, remember the important vessels over here. Then this RC continues behind. ये पीछे जाएगा RC है, and it continues as the posterior interventricular artery. So can you imagine this is the anterior posterior interventricular artery. इनके बीच की जगह है. This is the space between anterior and posterior interventricular artery. पूरा का पूरा ये इंटरवेंट्रिकुलर क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है. एंड इन दिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आल्सो डू रिमेंबर दैट मेजॉरिटी सप्लाई कम्स फ्रॉम द एलसीए. एलसीए मतलब एलएडी. एंड 1/3 सप्लाई कम्स फ्रॉम द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, 2/3 कम्स फ्रॉम द एलएडी आर्टरी. PIVA most of the cases is always most of the cases 80-90% branch of RCA. And therefore this determines the dominant circulation of the heart. Maybe I hope clear होगा. याद रखिए फिर भी ये point. So interventricular septum में there is a supply coming, 2/3 supply comes from the anti-interventricular and 1/3 comes from the post-interventricular. याद रखना इस point. ठीक. Now regarding this question और भी क्या सकते हैं? Suppose there is a atherosclerosis in LAD. ठीक है. Surgeon is doing a bypass surgery over here. Once the surgeon lifts this artery, which vein he might encounter? Vein भी तो होगी. So याद रखिए the great cardiac vein. It runs along with what? Runs along with the LAD artery and left circumflex artery. So therefore, this cardiac vein is running in the anterior interventricular sulcus or anti-interventricular groove. वहीं पर middle cardiac vein is running where? In the posterior with the posterior interventricular artery. ये याद रखना है. And they all actually what happens? They all combine to form the coronary sinus, which drains into where? Right atrium. Which drains into right atrium. ये याद रखिए. ठीक. So these are few veins. चलिए आगे बढ़ते हैं हार्ट से आगे. Now these are other miscellaneous topics. These are few 8-10 topics हमने अभी तक कवर किए हैं. But there are few other topics. I just wanted to throw some light over here कि आपको एक end में rapid revision रहे. ध्यान से सुनिए. It is a high topic. Maybe the speed might be on a higher side, but समझिए चीज को. We have less time. We have to gather more knowledge. High topics. This is what we are showing over here. The inguinal canal right side already written. ठीक है. अब देखिए क्या क्या चीजें हैं इसमें. Canal कहाँ से शुरू हुआ? Deep inguinal ring to the superficial inguinal ring where it is located right over here. Canal. Oblique canal है around 4 cm. सवाल बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं. इंग्वाइनल हर्निया आप मान के चलिए पिछले 10 साल आप उठाइए, 9 साल पूछा जाएगा. इंग्वाइनल हर्निया और रिलेवेंट इंग्वाइनल कैनाल एनाटॉमी. हर्निया आया कहाँ से? कैनाल की एनाटॉमी से. तो देखिए क्या क्या सवाल आ सकते हैं. सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग किस पे डिफेक्ट है? इट्स अ डिफेक्ट इन द एक्सटर्नल ऑब्लिक. डीप इंग्वाइनल रिंग इज अ डिफेक्ट इन फेशिया ट्रांसवर्सालिस. क्वेश्चन यहां से बने. What is the structure just medial to deep inguinal ring? Inferior epigastric vessel is just medial to deep inguinal ring. दूसरी बात ये. दूसरा, if you look at the spermatic cord that is coming out, यहाँ पर कुछ fascias हैं.
एक्सटर्नल क्रेमेस्टिक एंड इंटरनल स्प्लेनेटिक फेशिया किस किसके डेरिवेटिव हैं सोचिए. एक्सटर्नल स्प्लेनेटिक फेशिया कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्लिक, क्रेमेस्टिक फेशिया इंटरनल ऑब्लिक, इंटरनल स्प्लेनेटिक फेशिया फेशिया ट्रांसवर्साइलिस. नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल. ये एक चीज, ये दूसरी चीज यहाँ पर ये हो गई. तीसरा हैसेलबैक ट्रायंगल समझिए. दिस इज द रेक्टस एब्डोमिनस दे आर शोइंग. देखो इफ आई जस्ट ट्राई टू हाईलाइट ओवर हियर, ये कुछ एरिया आपका बनेगा इस तरह से, इस तरह से बनेगा. दिस इज द रीजन हैसेलबैक ट्रायंगल. देखो दिस इज द साइट ऑफ विच हर्निया, ये बन जाएगा हमारा साइट डायरेक्ट हर्निया का, साइट ऑफ प्रोट्रूजन ऑफ डायरेक्ट हर्निया. इनडायरेक्ट हर्निया डीप इंग्वाइनल रिंग से आएगा, साइट ऑफ प्रोट्रूजन ऑफ इनडायरेक्ट. आईडी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है. So this is Hasselbeck's triangle. This is what? This is a Hasselbeck's triangle over here. ठीक. बाकी तो you have the walls of inguinal canal. आगे एक्सटर्नल ऑब्लिक है. रूफ किससे बनी? कंजॉइंट टेंडन. इसने क्या बनाया? रूफ. कंजॉइंट टेंडन इज व्हाट? इंटरनल ऑब्लिक प्लस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस. ये ले लीजिए. ओके. कंटेंट स्पर्मेटिक कॉर्ड इन मेल. फीमेल में you have basically the round ligament of uterus and ilium nerve. वो फीमेल में होगा. मेल्स में you have the basic content spermatic cord. So remember, you viewed this diagram: inguinal canal anatomy, inguinal hernias. Then what are the various surgeries for hernia? वो आप सर्जरी में पढ़िएगा. Next image, let us see. This is again related to anti-abdominal wall. Focus on the umbilicus over here. उसके नीचे जो ये तीन चीजें दिख रही हैं, these are the infraumbilical ligament. सवाल आता है. क्या सवाल? सुनिए. The median umbilical ligament is coming from the urachus or allantois. पहला सवाल ये. बीच में होगा. Median means अनपेड, सिंगल है बीच में. उसके साइड में ये यू हैव द मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट फ्रॉम ऑब्लिटेटेड अम्बिलिकल आर्टरी. क्या हुआ? ये मीडियल है, एल अम्बिलिकल लिगामेंट, याद रखिए. उसके भी साइड में यू हैव द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, पेरिटोनियम कवरिंग इट. दिस इज कॉल्ड एज द लेटरल अम्बिलिकल लिगामेंट बिकॉज़ दे सीम टू बी गोइंग टुवर्ड्स अम्बिलिकस. और कहां दिखते हैं? दे आर सीन ऑन इनसाइड ऑफ द एब्डोमिनल वॉल. बाहर नहीं दिखेंगे. यू विल सी देम फ्रॉम इनसाइड. देयर इंफ्राअम्बिलिकल, अम्बिलिकस के नीचे है. सुप्राअम्बिलिकल में एक ही है, फैल्सिफरम लिगामेंट, सुप्राअम्बिलिकल लिगामेंट. ये कहां से आ रहा है? वी ऑल शुड बी नोइंग. इट इज कमिंग फ्रॉम द लिवर. व्हाट डज इट कैरी? यहां पर एक वेसल होती है. बेटा कौन सी वेसल है? एट द लोअर मार्जिन ऑफ इट. दिस इज इन एम्ब्रियोलॉजी दैट वाज द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन. अब क्या बन गई है? आफ्टर बर्थ क्या बन गई? दिस फॉर्म द लिगामेंटम टीरिस. लिगामेंटम टीरिस हेपेटस. तो अम्बिलिकल वेन ये बन गई. अम्बिलिकल आर्टरी क्या बनी? मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट. रिवाइज कीजिए, हाई टॉपिक. ठीक है. नेक्स्ट इमेज देखते हैं. SMA सिंड्रोम, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम. दिस इज अ लेटरल व्यू. यू लुकिंग एट अ लेटरल व्यू. ध्यान से देखिए. दिस इज द एओर्टा ओवर हियर. पोस्टीरियर एस्पेक्ट, एंटीरियर एस्पेक्ट. T12 लेवल पे निकली सीलेक ट्रंक. L1 लोअर बॉर्डर पे निकली सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है. लेट्स से L1 पे निकली SMA. SMA सप्लाइज द मिडगट. ये नीचे जा रही है. बट बिटवीन द एंगल ऑफ SMA, अगर यहाँ पे मैं रेड कलर से एंगल बनाऊं, बिटवीन द एंगल ऑफ SMA एंड द एओर्टा देयर आर फ्यू स्ट्रक्चर्स दैट लाई एंड फ्यू ल्यूमिनल, मतलब ल्यूमन है. तो वो अगर ये एंगल कम हो गया then that luminal structure might compress. जाहिर सी बात है. What are those structures? वही हमें ध्यान देना है. वो क्या क्या है? लेफ्ट रीनल वेन बड़ी काम की है. आर्टरी नहीं, वेन. क्योंकि वेन ये है, ये वेन है. लेफ्ट रीनल वेन माइट कंप्रेस. अगर कंप्रेस हो गई तो क्या होगा? इन मेल्स देयर कुड बी हमारा वेरिकोसील होता है लेफ्ट साइड में. देयर कुड बी लेफ्ट साइड हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है. अदर स्ट्रक्चर इज थर्ड पार्ट ऑफ डोडेनम. ऑब्वियसली देयर कैन बी इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. थर्ड पार्ट डोडेनम, नॉट द फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट. ठीक. देन obviously not shown over here, but there are chances that the third part of duodenum है. इसके यहाँ पर एक और चीज रखी हुई है. It's a part of pancreas. Can you tell me? एक और चीज आ सकती है between the SMA and the aorta के एंगल पे. A part of pancreas that is the uncinate process of pancreas. It may or may not. तभी यहाँ शायद दिखाया नहीं है, प्लस और माइनस है, बट प्लस तो ही. It can come. So in SMA syndrome or the nutcracker भी बोलते हैं इसको. These structures might compress if the angle decreases. ये याद रखना है. ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now what is this? This is our thoracolumbar fascia. ठीक है. Thoracolumbar fascia. Now this cut section है. This is a posterior part. Obviously you can see the vertebrae. That's the anterior part. Focus हमें कहाँ रखना है? Focus हमें रखना है कुछ layers thoracolumbar fascia which are already made more bold. Highlight कर रखी है black color से. For example, मैं अगर लिखना शुरू करूँ, ये A से एंटीरियर लेयर ऑफ थोरैकोलम्बर, दिस इज M से मिडल लेयर, दिस इज P से पोस्टीरियर लेयर. कुछ और चीज देखिए. एंटीरियर मिडल लेयर के बीच में विच मसल ग्रुप इज देयर ओवर देयर? कौन सी मसल है? ये वाली कौन सी मसल होगी? व्हिच आई एम हाइलाइटिंग विद द येलो कलर. दिस इज द क्वाड्रेटस लंबोरम. सवाल आ सकता है
Which muscle lies between the anterior and the middle layer of the thoracolumbar fascia, quadratus lumborum muscle. और मिडिल पोस्टे बीच में कौन सी मसल है? दिस द ग्रुप ऑफ इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप, याद रखिए। ये मोटा फेशिया है ऑन द साइड्स, क्योंकि और तो कोई बोन है नहीं, देयर इज अ रिब केज अबव एंड हिप बोन बिलो। आगे बेटा कौन सी मसल है? दिस मसल ओवर हियर इज psoas मेजर व्हिच हैज इट्स ओन सेपरेट psoas फेशिया, psoas शीथ होती है उसके आगे, ठीक है, वो अलग है। तो रिमेंबर thoracolumbar fascia पीछे, and it has 3 layers and it encloses 2 group of muscles. आगे quadratus lumborum है, पीछे rectus spinae है, इतना याद रखना है। अब वही आगे कंटिन्यू करके thoracolumbar fascia gives rise to 2 muscles। ये जो lumbar fascia है भैया देखिए, ये एंटी एब्डोमिनल वॉल की 2 मसल को जन्म दे रहा है और अटैचमेंट दे रहा है। व्हाट आर दोस? अंदर की मसल्स कौन सी हैं? इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांस एब्डोमिनस, नॉट द एक्सटर्नल ऑब्लिक। तो इस फेशिया से ये 2 मसल निकलेंगी। देखिए आप देख लीजिए, ये आईओ है, ये टीए है, और ये बाहर की एक्सटर्नल ऑब्लिक। एक्सटर्नल ऑब्लिक हैज अ पोस्टीरियर फ्री बॉर्डर, पीछे अटैच नहीं है, यहाँ पर कोई अटैचमेंट नहीं, ध्यान रखिए इस बात का। thoracolumbar fascia इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ओपनिंग्स इन द डायफ्राम, दिस आर वेरियस डायफ्रामेटिक ओपनिंग्स। कौन सा डायफ्राम? thoracoabdominal डायफ्राम। हम यहाँ पे एक व्यू देख रहे हैं, ऊपर से व्यू देख रहे हैं। 3 मेजर ओपनिंग्स, ध्यान दें ऊपर से यहाँ पर जो नंबर्स हैं, दीज आर 7, 8, 9, 10, 11, 12, दीज आर नंबर ऑफ रिब्स। 3 मेजर ओपनिंग्स याद रखिए, इमेज आ सकती है। In a, because diaphragm we all know the sides we have the muscle, central we have the tendon. Central tendon पे क्या रखा है? बेसिकली हार्ट रखा है, ऊपर हार्ट रखा है। So therefore हार्ट में नीचे से कौन सी स्ट्रक्चर एंटर करेगा? आईवीसी। So central tendon will have a IVC opening. लेवल क्या होता है इसका? T8 लेवल। Along with IVC we all should know it has a right phrenic nerve भी आ रही है, एक पॉइंट ये। अच्छा, अब हार्ट के पीछे क्या है? ईसोफेगस। So esophagus going behind heart, वो नीचे आएगा, डायफ्राम को पियर्स करेगा, स्टमक बनना है, so it goes behind the heart. It pierces at the muscular level. तो second opening क्या है? esophageal opening है। Which level? T10 level, क्योंकि पीछे थोड़ा नीचे जाएगा। What passes along with the esophageal opening? We have both the vagus nerve, right or left, and we have what? We have the esophageal branches of left gastric vessels. याद रखो। Then उसके और पीछे क्या है? Vertebrae के साइड में क्या है? We have the aorta. So descending thoracic aorta becomes abdominal aorta, और पीछे जाएगा। So we have this aortic opening at which level? T12 level, पीछे और पीछे। So here we can send sternum है तो आगे है, this is posterior. What passes along with the aortic opening? We have thoracic duct and sometimes azygous vein may also pass. ये याद रखो at least. Then they can also ask you about the arcuate ligament, lateral medial arcuate ligament. वहां से क्या पास करता है? इमेज में है सब कुछ। For example, lateral arcuate ligament में what is passing? Subcostal vessels and nerve. Medial arcuate ligament में what is passing? आप देख के बताइए खुद ही। There is a chain, what? Sympathetic chain, medial arcuate ligament। ये याद रखना है हमको चीजें, okay? Basic idea। बाकी diaphragm itself is a very important topic, it's embryology, कहाँ का attachment है, क्या क्या पास करा, भी already have seen। Functions क्या है, that is all। What is the main nerve supply of diaphragm? We all should be knowing phrenic nerve, and the root value बहुत बार आया है, C3, C4, C5। motor nerve supply, the sole motor supply of the diaphragm is phrenic nerve, इतना याद रखना है। Let's move ahead from the diaphragm, अगली kidney पर। So now let us move to the next important high topic. What is this? This is the anti-relation of the kidneys. Just a gut feeling that, see nowadays हो क्या रहा है कि आप abdomen कोई क्वेश्चन देख लीजिए, in INI और NEET PG relations बहुत आते हैं, be it duodenum, be it even head and neck, be it spleen, be it stomach, be it kidney. So here we are looking at the anterior relation. क्या देखना है हम? anterior relation देख रहे हैं दोनों किडनी के, राइट और लेफ्ट, तो वो डिफरेंट होंगे। posterior relation normally as common because kidney being a retroperitoneal, posterior relation इसका हमेशा posterior abdominal wall ही होगी। anterior relation are different, वो देखिए क्या क्या है, राइट एंड लेफ्ट। अब राइट में क्या है? anterior relation में क्या होगा? लिवर होगी सबसे पहले, ठीक। देन सेकेंड पार्ट duodenum होगा इन द हाइलम ऑफ किडनी। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आई एम नाउ हाईलाइटिंग। ये तो हो गया हेपेटिक एरिया, हेपेटोरेनल पाउच याद रखिए। इन दी हाइलम ऑफ द राइट किडनी डुओडेनम आता है। विच पार्ट ऑफ डुओडेनम? इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम, D2, याद रखिए। क्यों? क्योंकि कल को कोई आपको सेकंड पार्ट डुओडेनम की सर्जरी करनी है, यू हैव टू केयरफुली लुक एट कि इसके जस्ट पीछे रीनल हाइलम है। हाइलम का मतलब रीनल वेसल्स एंड यूरेटर होगा। देन नीचे आप आओगे तो कोलिक एरिया, विच कोलिक एरिया? हेपेटिक फ्रैक्चर ऑफ कोलन, ठीक, ये याद रखना। ऊपर तो देखिए दोनों साइड एड्रीनल होगा। तो ये 2-3 आप राइट में याद रखिए इस रिलेशन में, लिवर एंड डुओडेनम।
फिर कम टू द लेफ्ट किडनी, यहाँ पर आगे क्या है, स्टमक है, स्टमक लेफ्ट में, फिर आगे क्या है, पेनक्रियास है, फिर आगे क्या है, स्प्लीन है, ठीक। नीचे आप आओगे तो वही कोलोन है, विच फ्लैक्चर ऑफ कोलोन, नाउ द स्प्लीनिक फ्लैक्चर ऑफ कोलोन। अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था, इफ आई में आस्क ओवर हियर कि जो कोलिक एरिया है और यहाँ पे स्प्लीन है, तो विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स स्प्लीन फ्रॉम गोइंग डाउनवर्ड, नीचे आने से कौन सा स्ट्रक्चर प्रिवेंट करता है, तो एक ऑप्शन था यहाँ पे, एक लिगामेंट होता है, विच लिगामेंट इज दिस, दिस इज द फ्रेनिकोकोलिक लिगामेंट, ये क्वेश्चन आया था रिसेंटली। तो रिलेशन याद रखिए, एंटीरियर रिलेशन ऑफ किडनी, क्यों रिलेशन याद रखना है, इफ यू डू एनी सर्जरी ऑन द लिवर या डुओडेनम या फिर स्टमक और पेनक्रियास, रिमेंबर द स्ट्रक्चर लाइंग जस्ट बिहाइंड इट इज द किडनी, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, ठीक। उस तरह से क्वेश्चन बनेंगे कि while doing a surgery on this structure, which is the structure directly related behind or which might be involved in the pathology of this particular structure, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं, एक इमेज है, दो फ्रॉम द ऑफ द साइड, बट अगेन हम इसको नोट में ही पढ़ते हैं। Which nerve palsy is being shown over here? May I give you a hint? Extraocular muscle की nerve की बात हो रही है। There is third nerve, fourth nerve, and sixth nerve. These are three cranial nerves which supply the extraocular muscles. कौन सी लग रही है यहाँ पे palsy दिखा रहे हैं? और hint दूँ, this is the normal eye और यहाँ पर abnormal eye दिखाई गई है, which is having some nerve palsy. Third nerve है, fourth है, sixth है. This over here is a fourth nerve palsy, trochlear. This is fourth nerve supplies which extraocular muscle? हमें याद हो SO4, superior oblique muscle. So basically we are looking at a superior oblique muscle palsy. Superior oblique का मेन काम क्या होता है? The primary action of superior oblique is intorsion of eye. तो ये देखिए नॉर्मल है, नॉर्मल सामने देख रहे हैं, and when we lift our head to the left side, तो आई रोटेट करती है। When you lift our head to the left side, इस आई ने थोड़ा इंटॉर्ट किया, इसने थोड़ा एक्सटॉर्ट किया। Then this particular patient यहाँ पर SO palsy है, superior oblique palsy है, so इंटॉर्शन नहीं हो रहा है, तो right SO palsy है, so right eye is already extorted, बाहर की तरफ घूमी हुई है, नॉर्मली दिखेगी नहीं सामने, ऊपर नीचे नहीं है ना, राइट लेफ्ट है, ये घूमी हुई है, so we don't see it. What happens is normally the right eye is extorted, अब right eye ये मेरी है, बाहर घूमी हुई है, तो what I will do is I will tilt my head always to the left side, की लेफ्ट आई भी ऐसे थोड़ा घूम जाए तो ओरिएंटेशन बन जाए। If a patient comes to you, उसका हेड ऐसा है और ऐसे आपको देख के बात कर रहा है, ऑब्वियसली उससे भाई सीधे देख के बात करो, क्या सीधे आई एम कंफर्टेबल लाइक दिस, सीधे देखता हूँ तो थोड़ा धुंधला हो जाता है, ही इज कंफर्टेबल लाइक दिस, मतलब उसकी राइट एसओ पैल्सी या राइट फोर्थ नर्व पैल्सी हो सकती है, याद रखिए इस बात को, दिस इज सुपीरियर ऑब्लिक पैल्सी। जैसे ही वो हेड लेफ्ट को टिल्ट करेगा, कि ये तो ऑलरेडी राइट आई तो ऑलरेडी टिल्टेड है, लेफ्ट आई आल्सो गोज इनटू इंटॉर्शन नॉर्मली, अब अलाइनमेंट बन गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है एसओ पैल्सी में। थर्ड नर्व पैल्सी में क्या होता है, रिवीजन करते हैं, यहाँ पे आईज मूव डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट। सिक्स नर्व पैल्सी में ऑब्वियसली लेटरल स्क्विंट, लेटरल मतलब लेटरल रेक्टस पैल्सी हो गया, देयर इज मीडियल स्क्विंट, ठीक है, तो सिक्स नर्व पैल्सी में देयर इज अ मीडियल स्क्विंट हो जाएगा पेशेंट को, बिकॉज़ देयर इज एलआर पैल्सी, लेटरल रेक्टस पैल्सी। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर, व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ अपर कंटिन्यूएशन ऑफ इसोफेगस, मसल्स हैं बेसिकली, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स हैं, सुपीरियर मिडिल इंफीरियर, दिस इज अ कोरोनल सेक्शन। तो क्या दिखाया गया यहाँ पर, फेरिंग्स में वी आर लुकिंग एट अ कोरोनल सेक्शन, ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर कोरोनल सेक्शन। तो यहाँ पे तीन मसल्स है, सुपीरियर मिडिल इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ऊपर क्या है, बेस ऑफ स्कल, ऊपर बेस ऑफ स्कल। क्वेश्चन आते हैं इनके बीच से क्या स्ट्रक्चर पास करते हैं, तो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और बेस ऑफ स्कल से, या मान लीजिए 1 2 3 और नीचे से आ रहा है स्ट्रक्चर 4। तो अब ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये 1 बिटवीन द बेस ऑफ स्कल को मॉर्गेनी स्पेस ही बोलते हैं। फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब कुछ नहीं है, दिस इज द यूस्टेशियन ट्यूब, दिस इज द यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। तो बी above the constrictor, above the superior constrictor, there is eustachian tube, there is levator palatine muscle and ascending palatine artery. Between the superior and middle constrictor क्या पास कर रहा है, ये स्पेस नंबर 2 हो गया, नाइन्थ नर्व और उसकी मसल स्टाइलोफेरेंजिस। बिटवीन द मिडिल एंड इंफीरियर ये हो गया स्पेस नंबर 3, 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटरलेंजियल नर्व एंड सुपरलेंजियल आर्टरी। और बिलो द इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर स्पेस नंबर 4, याद रखना है स्पेस, कोई भी पूछ सकते हैं, इमेज याद रखिए, try to remember the contents over here. Okay, as you go into more common sense या लॉजिक लाओगे तो बन निकल आएगा, बट जितना आप देखते रहिए सिक्वेंशियल मैनर, ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट इमेज देखते हैं क्या है, ये हार्ट एम्ब्रियोलॉजी बताई गई है इसमें। Over here, this is the venous end, that is the arterial end, as already written over here also, arterial end और venous end। नीचे क्या होता है, दिस इज एसवी साइनस वेनोसस, उसके ऊपर प्रिमिटिव एट्रियम, देन वेंट्रिकल, देन बल्बस कॉर्डस, देन ट्रंकस आर्टेरियोसस। इनके मेन रेमिनेंट्स हैं दिए हुए हैं, दे कैन आस्क यू दिस ऑन एनी डे, कोई किसी भी दिन पूछ सकते हैं, जस्ट बी अ बिट प्रिपेयर्ड।
साइनस विनोसस में याद रखिए द राइट हॉर्न इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। अब सर लेफ्ट हॉर्न क्या बनाता है, लेफ्ट हॉर्न भी लिख लो यहीं पर, इट फॉर्म्स द कोरोनरी साइनस, जो वेन थी, दैट वेन विच रन्स अलोंग विद द कोरोनरी आर्टरी, कार्डियक वेन्स, दे फॉर्म कोरोनरी साइनस। उसके ऊपर प्रिमिटिव एट्रियम में आप आओगे तो ये रफ पार्ट बना रहा है दोनों एट्रिया का। उसके ऊपर प्रिमिटिव वेंट्रिकल में आओगे, मेनली फॉर्म्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। आप कहोगे सर राइट वेंट्रिकल कैसे बनेगा? दिस होल इज बल्बस कॉर्डस, इसमें एक प्रॉक्सिमल पार्ट है, तो यहां से आएगा आरवी, फिर यहां से आएगा हमारा कोनस कॉर्डस, ठीक, और डिस्टल जो पार्ट बनेगा यहाँ पर ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस बना देगा असेंडिंग एओर्टा पल्मोनरी। ओके सर हार्ट तो ऐसा होता नहीं, यस, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, डिटेल्स में एम्ब्रियोलॉजी बात करें, देयर इज अ लूपिंग ऑफ हार्ट, लूपिंग बनेगा, देन ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू सेप्टेशन बिटवीन द वेरियस चैम्बर्स, तब जाके एक नॉर्मल एनाटॉमी बनती है हार्ट की। बट दिस इज एक्चुअली द टू एंडोकार्डियल एंडोथेलियल आर्टरीज होती हैं, दे फ्यूज एंड दे फॉर्म दिस स्ट्रक्चर। उनमें देयर इज डायलेटेशन, देयर 4 to 5 डायलेटेशंस ओवर है, उससे अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहेंगे, एंड ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम इन बिटवीन, so there are 2 atria, 2 ventricle, this aorta and trunk also will get separated by the septa, ठीक, इस तरह से। तो बेसिक ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इमेज इफ वी कम ओवर हियर, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द लंग्स। याद रखिए लंग्स का डेवलपमेंट, लंग्स एम्ब्रियोलॉजिकली आ रही हैं एंडोडर्म से, एंडोडर्म में कहां से, दे आर कमिंग फ्रॉम द फोरगट, दे आर कमिंग फ्रॉम द फोरगट। टाइम पीरियड याद रखिए 5 to 16 वीक में क्या हो रहा है, 16 to 26, 26 वीक टू बर्थ एंड 8 month to child, childhood is said to be around 8 years of age। 3-4 चीजें हैं, स्यूडो ग्लैंडुलर पीरियड, मेन इवेंट्स अकरिंग ओवर हेयर, यहाँ पे लिखा है टर्मिनल ब्रोंकियल तक बन रहा है, ये फर्स्ट 16 वीक, 16 वीक इज अराउंड 4 months। देन कैनेलिकुलर पीरियड 16 to 26 वीक इज हाउ मेनी मंथ्स, 26 वीक इज बताइए कितने महीने हो गए, इट इज अराउंड 6 months, तो ये 6 month तक का टाइम है, ये 4 months तक का टाइम है, अराउंड 6 month में जाकर कैनेलिकुलर पीरियड खत्म होता है। व्हाट हैपेंस ओवर देयर इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल से बने रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल अभी एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। अब ये ध्यान देने वाली बात ये है, वी हैव टू कीप इन फोकस दिस पीरियड, टर्मिनल सैक पीरियड, इस पे क्या ध्यान देना है, एट दिस पीरियड व्हिच इज आफ्टर 6 month, तभी कहते हैं 6 month में अगर कोई बच्चा डिलीवर हो रहा है, प्री टर्म ऑब्वियसली है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सीएनएस दे आर नॉट फुली डेवलप्ड, सो उसके आगे वाइबल, आगे जिंदा रहने के चांसेस थोड़े कम। After 6 months, 7th month से chances of survival of a baby increases exponentially, क्योंकि अब उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो रहा है, टर्मिनल सैक पीरियड कवर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ पर। अब देखिए कैपिलरीज एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर इफ यू गिव देम स्टेरॉइड्स, सर्फेक्टेंट एंड ऑल दैट डेवलपमेंट, द चाइल्ड हैज अ वेरी वेरी गुड चांसेस ऑफ सर्वाइवल एट 7th month, ठीक। तो टर्मिनल सैक पीरियड है, इट इज फ्रॉम 26 वीक टू बर्थ। अब लास्ट जो है वो एल्वियोलर पीरियड है, याद रखिए ये नंबर ऑफ एल्वियोलाइज, मैच्योर एल्वियोलाइज ये बढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसमें एल्वियोलाई और आगे नहीं बढ़ेंगे, दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एम्ब्रियोलॉजिकली टिल 7 or 8 years of age, around 8 years of age the number of alveoli keeps on increasing। तो ये कुछ स्टेजेस याद रखिए, this is the level of question that they can be asked in INI-CET। so pseudoglandular up to 4 months, then up 5 to 6 5 weeks से पहले क्या हो रहा है, this foregut डेवलपमेंट हुआ, foregut से raised diverticulum that is known as respiratory diverticulum, फिर वहां से स्टार्ट होता है, that is known as germinal period। तो up till 4 months you have pseudoglandular, up till 6 months you have canalicular, अब 6 month के बाद now viability यहाँ से शुरू होगी, टर्मिनल सैक पीरियड, and then obviously childhood में you have the alveolar period। याद रखना इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। now ankle sprains are very common, so here what we are trying to show you is the 2 images of the medial side of the right ankle and this is the lateral side of right ankle। क्यों, कुछ ligaments पहचानी है इसमें, they might ask you name of few ligaments, ankle sprain होगा, ligaments could be injured, they might ask you ligaments, देखने में क्या क्या bones है, obviously this bone is tibia, this is calcaneus, ये calcaneum है, calcaneus बोल दीजिए। medial side में we have which ligaments, they are known as medial collateral ligaments or they are also known as deltoid ligament। कुछ लिगामेंट है पहचानने क्या क्या है। व्हाट इज दिस बोन ओवर है, दैट इज सस्टेंटाकुलम टेलाई, इट इज अ पार्ट ऑफ कैल्केनियम। देयरफॉर ये कौन सा लिगामेंट होगा, ये होगा टिबियो कैल्केनियल लिगामेंट। आई एम जस्ट सेटिंग T.CALC, एग्री, टिबियो कैल्केनियम। नाउ कैल्केनियम ये है, टिबिया और कैल्केनियम के बीच में कौन सी बोन है, वी हैव अ टेलस इन बिटवीन व्हिच इज हिडन बाय द लिगामेंट्स। ये कौन सा लिगामेंट होगा, दिस लिगामेंट ओवर हियर, इफ आई मे पुट अ मार्क लाइक दिस, ये कौन सा लिगामेंट होगा, it is going from tibia, आगे जा रहा है, not to talus but to navicular, because middle side navicular bone है, so this is tibio-navicular ligament। अब सर tibio-talar ligament कहाँ है, there are 2 tibio-talar,
फोकस ओवर हेयर, ये है एंटीरियर टीटी लिगामेंट एटीटी, ये है हमारा पोस्टीरियर पीटीटी पोस्टीरियर टिबियोटेलर लिगामेंट। तो दीज 4 लिगामेंट्स, एंटीरियर टिबियोटेलर ध्यान दीजिए, पोस्टीरियर टिबियोटेलर, टिबियोकैल्केनियल एंड टिबियोनेविकुलर, दे आर अ पार्ट ऑफ डेल्टॉइड लिगामेंट, ये बन के बनाते हैं डेल्टॉइड, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग लिगामेंट। ओके नहीं सर हम पढ़ते थे कि स्प्रिंग लिगामेंट होता है, यस यू आर करेक्ट, स्प्रिंग लिगामेंट इज नोन एज कैल्केनियो नेविकुलर, वो कैल्केनियम से नेविकुलर तक है, एंड इट इज जस्ट बिलो द हेड ऑफ टेलस। वो कहाँ है वो देखिए यहाँ पर रेड कलर से दिखाऊं, दिस इज अवर स्प्रिंग लिगामेंट, ये हमारा स्प्रिंग लिगामेंट है, प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट, पहचानिए लिगामेंट। दिस इज द Achilles tendon over here which you can understand, ठीक है। now over here these are other ligaments। now देखिए ligaments का नाम से difficult, they won't ask you all the minute ligaments but they are between the talus and navicle and the calcaneum, तो इनको बोल सकते हैं posterior talocalcaneal ligament। other tendons that they might ask you is ये कौन सा tendon जा रहा है, this is which tendon, this is going where it is going to the medial cuneiform and first metatarsal, बताइए कौन सा tendon होगा आगे से आ रहा है, मिडल साइड से आगे से आ रहा है, दिस इज द टेंडन ऑफ टिबियालिस एंटीरियर मसल। एक टेंडन आपको दिखेगा ये नीचे जा रहा है, दिस इज द टेंडन ऑफ टिबियालिस पोस्टीरियर, दिस वन ओवर हियर, दिस इज टिबियालिस पोस्टीरियर। बेसिकली अपार्ट फ्रॉम डेल्टॉइड एंड स्प्रिंग लिगामेंट एक दो स्ट्रक्चर और ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नाउ मोर कॉमनली इंजर्ड आर ऑन द लेटरल साइड बिकॉज़ एंकल स्प्रेन क्या होगा, इन्वर्जन स्प्रेन इज मोर कॉमन लेटरल साइड में, सो लेट अस सी अ कपल ऑफ लिगामेंट्स ओवर हियर। आप देखिए यहाँ पे तो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है, यहाँ पे बोन कौन सी होगी ऊपर, दिस इज द बोन फिबुला। अब देखिए लेटरल कोलेटरल लिगामेंट में क्या क्या आता है, ऑब्वियसली यहाँ पे फिबुला है, देखिए यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स, चलिए यहाँ पे लिगामेंट्स देखते हैं। तो लिगामेंट्स क्या क्या है यहाँ पर, दिस ओवर हेयर इज व्हाट, इट इज एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगा, ATFL बोलते हैं, वेरी वेरी कॉमनली इंजर्ड। आगे है पीछे जा रहा है जो हमारा ये, दैट इज पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट PTFL। अब फिबुला से जो कैल्केनियम में जाएगा, दिस वन ओवर है दैट इज नोन एज कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट, ठीक। और दीज 3 ओवर हेयर दे फॉर्म द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ये 3 हमारे यहाँ पे आप देखिए एंटीरियर टेलोफिबुलर, पोस्टीरियर टेलोफिबुलर एंड कैल्केनियोफिबुलर, ये 3 है। उसमें हाईलाइट अगर अपन कर दें, दिस वाज अवर टिबियोकैल्केनियन, पोस्टीरियर टिबियोटेलर, एंटीरियर टिबियोटेलर एंड टिबी, ये हमारा बना डेल्टॉइड, ये बना हमारा लेटरल कोलेटरल। अब लेटरल कोलेटरल इज क्वाइट स्मॉल। अब बाकी स्ट्रक्चर्स क्या हैं देख, कुछ अब वो भी देखते हैं। व्हाट आर दीज 2, ये क्या है, दीज आर पेरोनियल रेटिनाकुला, जिनके अंदर से आप पेरोनियस ब्रेविस और पेरोनियस लॉन्गस मसल के टेंडन देखिए यहाँ पर है, ठीक। These 2 are peroneal reticula। और क्या चीज हो सकती है, एक चीज और आप देख लो यहाँ पर, दिस इज नोन एज बाइफरकेट लिगामेंट, बिकॉज ये लिगामेंट इस तरह से बाइफरकेट कर रहा है। so, एक एक्स्ट्रा चीज आप याद रख लीजिए, बाइफरकेट लिगामेंट, बेसिकली इट इज गोइंग फ्रॉम कैल्केनियम टू क्यूबॉइड, कैल्केनियम टू नेविकुलर। तो ये कैल्केनियो क्यूबॉइड, कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट है। तो बाइफरकेट इज कैल्केनियो क्यूबॉइड एंड कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट, बस याद रखिए। दिस फॉर द INI, but remember first of all आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। वेयर आर द अदर टार्सल्स, टार्सल्स बोन रखी कहाँ है, कार्पल बोन कहाँ रखे हैं, वेयर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्टियो में वो भी समझना है। उसके बाद ये लिगामेंट्स आएंगे। मोस्ट कॉमनली इंजर्ड क्या होता है इन्वर्जन स्प्रेन में, दिस लिगामेंट एंटीरियर टेलोफिबुलर, मोस्ट कॉमनली इंजर्ड, तो पता होना चाहिए कहाँ पर है ये, राइट। चलिए लेट्स मूव फ्रॉम हियर, दिस इज द TS ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये हमने बनाई यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड विद द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ओवर हियर। तो this is what, this is basically dorsal column, you can see fasciculus cuneatus and gracilis। याद रखिए CTFL हमेशा याद रखिए, what is CTLS, not CTFL, CTLS, okay, just remove this is CTLS, cervical thoracic lumbar sacrum, इस तरह से CTLS यहाँ जा रहा है, cervical thoracic cuneatus lumbar sacrum यहाँ पर। तो this dorsal column, these are sensation which it carry। यहाँ पर spinothalamic tract है, pain touch temperature यहाँ लिखा हुआ है। CTLS यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज CTLS। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, देखो अगर बाहर से देयर इज अ ट्यूमर ग्रोथ और एनीथिंग, ऑब्वियसली फर्स्ट इट विल इन्वॉल्व द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, सेम गोज ओवर हियर। दिस फाइनली इज द लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, मोटर ट्रैक्ट, कैन अगेन सी CTLS गोइंग इन दिस डायरेक्शन, CTLS मोटर ट्रैक्ट। जस्ट शोइंग यू कि कोई ग्रोथ अगर अंदर से हो रही है, इंट्रामेडुलरी कोई ग्रोथ है, विच स्ट्रक्चर्स माइट बी इन्वॉल्वड अर्लियर, और कोई अगर बाहर से कुछ इंजरी हो रही है तो विच स्ट्रक्चर्स, ये पूरा ट्रैक्ट एक साथ पूरा इन्वॉल्व होना रेयर है, ऑब्वियसली सम पार्ट विल बी इन्वॉल्व, सो वी शुड नो कि लोअर पार्ट बॉडी पहले जा रहा है या अपर पार्ट बॉडी चले जा रहा है। These are important व्हेन यू कोरिलेट क्लिनिकल एग्जामिनेशन विद इन्वेस्टिगेशन,
दीज थिंग्स शुड मैच। भाई ऐसा है ना कि यहाँ से कोई इंजरी या ट्यूमर ग्रोथ हो रहा है, पेंटस टेम्परेचर लॉस हो रहा है इसका गर्दन का और हाथ का और अपर लिम्ब का, तो दिस डजंट मैच, तो कुछ और होगा। दीज थिंग्स आर अप्लाई ओवर हियर, दीज थिंग्स आर आस्किंग INI। अब देखते हैं कुछ कैडेवरिक इमेजेस ब्रेन की। This over here we are trying to show you a coronal section of the brain, very beautiful image over here। थोड़ा सा enlarge करेंगे इसको, ठीक। Few structures that we can get hold of, हालांकि I know it is not very difficult। This over here is the corpus callosum, writing CC corpus callosum। उसके नीचे ये हमारा fornix है, F for fornix, और in between them you have the septum pellucidum, उनके बीच में यहाँ पर, so this is what, this is the LV, lateral ventricle। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ होगा? Between the diencephalon, यहाँ थर्ड वेंट्रिकल होगा। What are the structures we can see over here? इसको फटाफट देखें। This is obviously the gray matter, white matter, that's all corona radiata। ये मिलके बना रहा है IC internal capsule। This internal capsule you can see it is going down, it is going down over here like this। और बाकी स्ट्रक्चर्स आप देखिए, बाकी में क्या है भाई, यहाँ पर on the sides we have the lentiform nucleus, I'm writing L, ऊपर caudate है, अंदर thalamus होगा, on more middle side you have thalamus। So caudate lentiform they are part of basal nuclei, basal nuclei, thalamus यहाँ पर। नीचे आप देखो बेटा brain stem, this is the medulla oblongata, this thick part is the P for pons, ऊपर ये है mid brain वाला part, mid brain वाला part। Okay, you can see the basal nucleus, you can see the diencephalon, this obviously is the cerebellum। कुछ चीजें पहचानी है, fornix, septum pellucidum, ventricles पहचानी है। Okay, this thing we can see over here, you can see the gray and the white matter, that is actually cadaveric image। Next देखिए, this again transverse section, that was a coronal, ये था coronal, this is the transverse, ये TSI। Again just to over here, that's very famous, this is the internal capsule, that is what is commonly asked। बाहर हमारा lentiform होगा, which has putamen and globus pallidus, putamen बाहर है, अंदर globus pallidus। We have the caudate over here, we have the diencephalon or the thalamus over here, that is the internal capsule। यहाँ पर अभी ये पूछ सकते हैं, they can ask, you can see this very thin gray matter outside the what we can say lentiform nucleus। This is basically known as claustrum, इसे बोलते हैं हम लोग claustrum, right? So this is known as claustrum। This is the whole lentiform, ठीक है, lentiform lens shape, that is caudate, अंदर का diencephalon। कुछ चीजें ध्यान रखनी, ऊपर एक corpus callosum है ही, that is the commissural fibers, right? चलिए, that is the medial aspect of the brain also। इसमें कुछ structure देख लीजिए, ये भी they can ask you in many ways। This is obviously which aspect of which hemisphere, that is the right hemisphere। क्यों? क्योंकि ये anterior है, ये posterior है। posterior क्यों? Because here we can see the cerebellum, correct? That is the brain stem। brain stem में याद रखिए how to recognize it, this the thick part is the pons, नीचे medulla oblongata हो गया, ऊपर हमारा यहाँ mid brain हो गया। और चीजें देखो यहाँ पहचानी है, this ventricle is the fourth ventricle, ये fourth ventricle है। What, this is the aqueduct of Sylvius, मैं SIL लिख रहा हूँ, Sylvius। This whole over here, dots over here is the diencephalon, नीचे hypothalamus है, ऊपर thalamus है। और चीजें सब समझिए यहाँ पर, this is the site for the lateral ventricle, that is CC corpus callosum, जिसमें कि आगे you have this rostrum, genu, body and splenium part यहाँ पर आ गया। Yes or no? Can you identify this vessel? ये vessel identify कीजिए, which vessel will be this, which artery will be this? Running on the medial side, that is our anterior cerebral artery, ये हमारी anterior cerebral artery है, okay, and all its branches, ठीक। So few structures over here, पहचानी cadaveric image of this। चलिए आगे बढ़ें, and the topic over here are basically, they can ask you esophageal constrictions। the image is self-sufficient, difference बस यहाँ पे ये है, one, this dot is taken from the mouth, and one measurement is taken from the, when you insert the Ryle's tube from the nose or from the mouth, difference comes around 3 to 4 centimeter। constriction मिलेंगी, पहला मिलेगा cervical constriction, where you have the junction of the pharynx and the esophagus, that is around 15 centimeter अगर आप mouth से डालो, 18 centimeter if you go from the nasal cavity, first constriction। second constriction is around where the aorta and the left, याद रखिए bronchus जब बोलते हैं, when we basically refer to the left bronchus, वहां पे constriction मिलेगा, that is around 25 और 28 सेंटीमीटर, तीन का डिफरेंस है। अगला जो थर्ड या फोर्थ constriction कह सकते हैं, that is around when it enters the diaphragm, that is around 40 to 44 सेंटीमीटर। याद रखिए कुछ लेवल्स यहाँ पे constrictions, ठीक। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। Then upper limb part, very very famous question, आजकल बहुत आ रहा है। few nerves related to the humerus। now इसमें आप ऑर्थो में already must have been covered
कि क्या क्या इंजरीज होती हैं, के लिए क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी। बट याद रखिए एक्सिलरी नर्व ओवर हियर रिलेटेड टू द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। तो ये कहाँ का डैमेज हो सकती है, क्विक रिवीजन, डिसलोकेशन हो जाए शोल्डर का, सर्जिकल नेक फ्रैक्चर हो जाए, और आईडी इंट्राडेल्टोइड इंजेक्शन अगर IM इंजेक्शन लग रहा है उसमें, there can be problem axillary nerve. If there is a fracture of the mid shaft of the humerus, radial nerve can be involved. याद रखिए, this is at the fracture mid shaft, ये involve वहाँ हो सकता है. Ulnar nerve goes behind the medial epicondyle. I again urge you, if you have time, then go through the extra and the clinical videos, whichever you feel you are lacking in understanding. डर्मेटोम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सरफेस मार्किंग है, लैंडमार्क्स हैं, सर्जिकल एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हैं, गो थ्रू इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Ulnar nerve goes behind the medial epicondyle, तो it can be involved in fracture medial epicondyle. याद रखिए इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ें. अदर फ्रैक्चर्स इन्वॉल्व, जैसे सुप्राकॉन्डाइल फ्रैक्चर है, एंटीरियर इंटॉर्शन नर्व माइट बी इन्वॉल्व ओवर देयर. ठीक है, तो ऑब्वियसली फॉर दैट आगे आ जाओ. एक और लास्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पे, एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो. दिस इज द लास्ट टॉपिक ओवर हियर, दैट इज एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो. हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला, एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो. Which elbow are we seeing? खुद सोचिए, ये जो प्रोमिनेंट है यहाँ पर, दिस इज medial epicondyle, तो ये राइट, दिस इज राइट साइडेड, राइट ह्यूमरस एंड राइट रेडियस हम देख रहे हैं. वी आर लुकिंग एट द राइट क्यूबिटल फोसा, और राइट एल्बो बोल सकते हैं. वेसल्स विच आर एनास्टोमोसिंग, ध्यान दीजिए, विच आर दो वेसल्स. एनास्टोमोस होता है क्यों? बिकॉज वंस यू, आप जब फ्लेक्स करोगे तो दिस आर्टरी माइट कंप्रेस, तो साइड में देयर आर फ्यू चैनल्स विच आर मेड नेचुरली सो दैट द ब्लड फ्लो जाता रहे प्रॉक्सिमल से डिस्टल. तो देखिए यहाँ पर मीडियल साइड में यू हैव अल्नर कोलेटरल आर्टरीज, ऊपर दो अल्नर कोलेटरल आर्टरीज हैं, नीचे ऐसी यार अल्नर रिकरेंट आर्टरीज. अब देखिए कौन किससे मिल रहा है यहाँ पर, वो जानना जरूरी है. एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी मीट्स विद इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी मीट्स विद सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी. ये बना एनास्टोमोसिस ऑन द मीडियल एस्पेक्ट, मीडियल एपिकोंडाइल के आगे और पीछे. That is why this artery is also known as supratrochlear artery. एक ये और नोट कर लीजिए, supratrochlear artery, because it lies just above the trochlea of the humerus से बोलते हैं. अब आ जाओ लेटरल साइड में. लेटरल साइड में you have a middle collateral and a radial collateral. जाहिर सी बात है, radial collateral will meet with the radial recurrent और middle collateral will meet with introtious recurrent. चलिए यहाँ पर बना लेते हैं भाई क्या क्या मीट कैसे कैसे हो रहा है. So radial collateral with radial recurrent and introtious recurrent means the middle collateral. अब radial collateral आप देख लीजिए आगे है, this is more anterior and this are anastomosis more posterior. तो यहाँ पर भी याद रखिए anterior है, ये anterior है, this is going more posterior. याद रखिए, ठीक. They can show you an image, although it is not a very simple question, but topic तो है, and they have asked in previous exams other arteries like supratrochlear artery, anastomosis around elbow, ये पूछ सकते हैं. लेकिन even ask you which artery runs along with ulnar nerve, सोच के बताइए. You have the options over there. Which artery runs with ulnar nerve? Ulnar nerve कहाँ है? Where is ulnar nerve? Ulnar nerve is behind medial epicondyle. So this is superior ulnar collateral artery, ये जा रही है वहाँ ulnar nerve के साथ. देखो any question like this. Anatomy में इमेज हमें देख के सिर्फ रटना नहीं है, थोड़ा सा उसको विजुलाइज करना कि हाँ ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑल पास करते हैं. Then correlation, and then I am sure majority of your questions can be solved by just if you have a good basic knowledge. आप ये rapid recap को रिवाइज करें फटाफट और इसमें पॉइंट्स लें. Most of the questions in the exam can be easily taken off. So this is all from my side. I hope you guys enjoy. All the best. And any query, कोई भी query है आप नीचे comment box में लिखिए. We'll more than happy to help you. I wish you all the best. Time कम है. रिवीजन करते जाइए. जो पढ़ लिया भरोसा रखिए, सब हो जाएगा. कॉन्फिडेंस, नॉलेज सब में 19-20 का अंतर है. अब आ गया टाइम बिलीफ का, अब आ गया लास्ट में पैनिक नहीं होने का. अब आ गया बस जो टाइम मिला है, एक मिनट इसमें कीमती है और बिलीव करना है अपने, बस काम खत्म, सब हो जाएगा. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.